तो आज जो है हम फिर से जो है लीड कोड का 5 हार्ड सवाल चुनेंगे और उसको पूरा ट्राई करेंगे करने का। तो चलिए मैं प्रॉब्लम सेक्शन में चलता हूँ। लेट्स मूव इन द प्रॉब्लम सेक्शन और इसमें से हम सवाल चुनते हैं। सबसे पहले हम मैथ सेक्शन से एक सवाल चुनते हैं। लेट्स पिक वन क्वेश्चन फ्रॉम द मैथ सेक्शन, मैथ हार्ड। तो देखिए रेंडमली मैं एक सवाल चुन रहा हूँ। चलिए nth मैजिकल नंबर, रैंडम पिक। हमने मैथ से एक सवाल चुना, nth मैजिकल नंबर। कभी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया इसको। आई नेवर हैव अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। तो इसी तरह से एक और लेते हैं। चलिए ग्रीडी से लेते हैं। ग्रीडी लीड कोड। ग्रीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो मच इंपॉर्टेंट ग्रीडी इज। चलिए ग्रीडी से एक सवाल लेते हैं। लेट्स पिक अ रैंडम क्वेश्चन फ्रॉम द ग्रीडी सेक्शन। एक काम करते हैं, मिनिमम कॉस्ट टू हायर के वर्कर्स, यही लेते हैं। पंक्ति में ही चल रहा है। चलिए तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आई हैवेंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिफोर। तो एक सवाल चुनते हैं। एक तो मैथ से हो गया, एक तो ग्रीडी से हो गया, एक तो डीपी से, डायनामिक प्रोग्रामिंग से। डायनामिक प्रोग्रामिंग से एक चुनते हैं। लेट्स पिक वन क्वेश्चन फ्रॉम डायनामिक प्रोग्रामिंग लीड कोड हार्ड। So let's pick one question from dynamic programming DP section. Very important DP is. So let's Zuma game. गेम प्रॉब्लम ही ले लेते हैं। चलिए तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल हम लेंगे ग्राफ से। ग्राफ लीड कोड, ठीक है। ग्राफ सेक्शन से लीड कोड के सवाल लेते हैं हम। लेट्स पिक वन प्रॉब्लम फ्रॉम द ग्राफ सेक्शन ऑफ द लीड कोड। सो यहाँ पर कौन सा सवाल है? रीचेबल नोट्स इन सब डिवाइडेड ग्राफ। क्या ले लें यार, ये लेते हैं। ये लार्जेस्ट कलर वैल्यू इन ए डायरेक्टेड ग्राफ। ये चौथा हो गया। और पांचवा सवाल हम चुन लेते हैं बिट मैजिक से, बिट मैनिपुलेशन लीड कोड। बिट मैनिपुलेशन लीड कोड, ठीक है। और एक सवाल बोनस लेंगे ब्रेन टीजर से। ब्रेन टीजर दैट मीन्स पजल। ऐसा पजल कि यू विल गेट स्टक। तो पजल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ब्रेन। इफ यू वांट टू डू सीपी you have to be very good at puzzle. But there is a problem in the practice of lead code that you are not going to practice a lot of the paragraph reading, and that is very important while solving. कौन सा सवाल है? मैथ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अचीवेबल ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ये ले लेते हैं। अच्छा एक तो ब्रेन टीचर सेक्शन से लेंगे, ठीक है। एक बोनस सवाल बनेगा तो बनेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है। ब्रेन टीजर मीन्स पजल। देर इज ए सेक्शन इन द लीड कोड ब्रेन टीजर। ज़्यादा सवाल नहीं है उसमें, बट वेरी गुड क्वेश्चंस आर देयर। सी वेयर इज द ब्रेन टीजर? ये दिस section has 16 problem. What are the difficulty of the problems? I have attempted one question but I was unable to solve that question. Very tough question. You will completely get stuck at that question. The question is at that type of question is bulb switcher. We want to be good at puzzle.
So these are the 6 questions I have picked. So we will attempt all these questions one by one and see what we can do. So let's start our discussion from the first problem we have. So I am little zooming my. So this is the first question we have. Nth magical number. So a positive integer is magical if it is divisible by either a or b. So given three integers n, a and b, return the nth magical number. Since answer may be very large, return it modulo 10 to the power 9 plus 7. Okay, return it modulo 10 to the power 9 plus 7. Since answer may be very large, so we have given three integers n, a and b, and so a number is called magical, and a positive integer is called magical if it is divisible by either a or b. If the integer is divisible by either of the one of the integer given, we have a or b, then we can say that number is magical, and we have to find the nth magical number, and the answer can be very large. So you can simply return the modulo of that number by 10 to the power 9 plus 7. So let's call it mod. So how can we approach this problem? N value will go up to 10 to the power 9. So a and b are two integers. So if we let's see what is the range of a and b. Constant for the a and b is a and b will vary from 4 into 10 to the power 4, like that. Okay. What we can do, I am opening the whiteboard, and we have given n will be less than equal to 1e9, a comma b we have given less than equal to 1e4. So this is the first, this is the second thing we have given. We want to find nth magical. What is the condition given for the nth magical? Let's say x is the nth magical number, then x modulo a is equal to 0. Yeah, x modulo b is equal to 0. So how can we find this nth magical number? So as you know, number will be either the multiple of a or either the multiple of b. This is the thing we have. So if x want to be a magical number, then it must be a multiple of a or b, or maybe of the both. Okay, this is the thing we have. Okay, so as you know, one thing very common we have. Let's talk a little bit. So let's say a is equal to 3. I am taking the case like that. A is equal to 3 and b is equal to 5. What will happen? Let's write the multiple of 3 and 5. 3, 6, 9, 12, 15. Like that, your multiple of 3. Likewise, we have the multiple of 3. And in the similar manner, the multiple of 5 will be like this. 5, 10, 15. So we can see this is the first number which is common in the multiple of both number. This is the first number which is common in the multiple of both numbers. Very simple thing we have. Now this is the first number which is multiple of the both number. Okay, this is multiple of the both number. So this first number is the basically the multiple of, so the number which will be common in the, let's say there will be some number which will be the multiple of 3 as well as 5. So that number will be basically the multiple of LCM of 3, 5. So the number which is going to be the multiple of a and b will be common, will be the multiple of both number a as well as b. This is the first observation we have. Okay.
So how can we find the solution? How can we find the solution? Let's say our solution, what do you think? 10 की power 9th number you are looking to find. So A and B is going to be less than equal to 10 की power 4, as we know, as given in the question. So in worst case, let's talk about you want to find the n equal to 10 की power 9, 10 की power 9th number you want to find. So in worst case, what will be the value of the number nth magical number? What will be the value? It will be the 10 की power 9th multiple of A or B, maximum of A comma B. In worst case, it will happen that multiple of maximum of A comma B, 10 की power 9th multiple of maximum of A comma B will be your nth magical number. In worst case, it will happen. So, and if the worst case is happening, then this number will go up to 10 की power 9 into 10 की power 4, that is 10 की power 13. So in any case, your number is going to lie between, we have the number, and that is going to lie between 0 to 1e14. This is going to be the case we have. Now in this range, we want to find the nth number. So if let's say you want to find, so in this range we want to find the nth number which is magical. That's it. So if nth number is magical, let's say this number, the number x is the nth multiple, nth magical number. If this is the case, so how can we know that this number x is going to be the nth multiple? So very simple. Here is the observation. Here is a very simple observation that there will be some number of multiple which is less than equal to A, which is multiple of A. There will be some multiple of B which is less than equal to x. So this is going to be the number of multiple which is less than equal to x, number of multiple of A less than equal to x, number of multiple of B less than equal to x. Let's say the number of multiple of A less than equal to x is A1, and let's say the number of multiple of B which is less than equal to x of number B is B1. And let's say A1 intersection B1 is the number of common multiple between A1 and B1. So number of multiple in the range A1 to A to x and B to x is nothing but A1 plus B1 minus A1 intersection B1. This is the common number multiple. And if so, this value is, let's say the value of this number is z. If z is equal to n, then x is definitely going to be your nth magical number. Nth magical number. And there is a case, it should also be divisible by either A or B. Then it is going to be nth multiple. So z can be greater than equal to n, or z is less than n. This is the two cases we are going to have. If z is less than n, that is number of multiple in the range A to x and B to x is it's somehow less than n. That means you have to go for larger value. Then only you can get the z value greater than equal to n. And if it is equal to less than equal to n, if it is less than equal to n, if it is less than equal to n, if it is greater than n, if it is less than n, we have talked about, we will have to search in the larger value of x so that we can reach the nth magical number. But if z is greater than equal to n, in that case we have to search our number in this range, in the lower range. Very simple, in the lower range. So we can see here that we can use binary search because we want to search our number integer x in the range 0 to 1e14, and we have talked about how we can we will divide our range in two range. Always we will divide our range in two range, and then we can take the decision that in which range we have to search, we have to continue our searching operation. So we are able to take the decision of which segment we will go for further search and which we will discard. So that's why here binary search will definitely is going to work. So we should go for binary search.
But here is the problem, that how will you find this A1 intersection B1? Very simple. Let's find the LCM of A and B. Let's find the LCM of A and B and find the number of multiple in the range LCM of A comma B to X. That will be A1 intersection B1. Very simple thing we have. So that's it we have. So now we can proceed in our problem. So we can proceed in our problem. So that's it. We can proceed. We can code our problem. So let's code it. So LCM, we want to find the LCM. So we have to find the LCM. And for that I have a control T. Here we have a LCM function. We will directly use that function from here, LCM. So so this is the LCM function we have. So this is the thing we have. Now what we can do, let's have a integer int LCM is equal to nothing but, not int LCM, LC equal to LCM of A comma B. Okay, we have LCM of A comma B. So we have the LCM. Now we will do our searching operation in S equal long. For the long, first define LL long, and what we can do, we will search our integer x, which will be going to be the nth magical number in the region s barabar 0 to e barabar 114. So now we can write while s is less than equal to e, and then we have a very simple thing, LL mid equal to s plus e minus s by 2. Let's say somehow you have counted the number of multiple in the region, so you have calculated the value z. So if z is greater than equal to n, so we will search for the lower region. In else case, if z is less than n, then we will continue our search operation in the higher region, in the segment having higher value. So the segment having higher value will start from s equal to mid plus 1 and will go up to e. Okay, so in this way we can select our segment in which we will continue our searching. So that's it we have. Now let's talk about if z is greater than equal to n. If z is greater than equal to n, then in that case what we will do? So we will check that if this mid modulo a is equal to 0, yeah, mid modulo b is equal to 0, and z is equal to n. In that case, this number mid is going to be your what? This number mid is going to be our nth magical number. So answer will be equal to mid, and we will continue our searching. If we want, we can break it. Let's break it. So we have searched our nth magical number. Okay, and if it is not nth magical number, then we will continue our searching in the segment having lower value. So that's why we have to update our e value from e to mid minus 1. That's the simple thing we have to do. And after that
let's say we have a answer, long answer. After that, very simple thing, first define mod, दो दो चार दो छः दो आठ 199 plus 7, and we will do a very simple little bit of thing, answer modulo equal to mod and return answer. This is the thing which we want to do. Now let's talk about how we can calculate this z value. We have our LCM. Very good. We have our LCM. So number of multiple in the range of A to mid. So what is the number of multiple you have going to be in the range A to mid? Let's call that integer. Let's make it LLZ. Z equal to 0. Acha. So let's have a LLA1 is equal to nothing but LLA1 is going to be the number of multiple in the range A to mid. That's it we have. So let's say if A value is 3 and mid value is 6, the number of multiple is going to be 6 by 3, that is 2. So we have to simply do one thing, mid by A, and in the similar manner number of multiple in the region let's make it LL. So it is also going to be equal to like this, make it like this. So we have talked about, we are talking about mid by B, so it will be nothing but mid by B, and in the similar manner we have A intersection B, that is let's call it AB. Is nothing but mid by LC. So Z equal to A1 plus B1 minus AB. Very simple thing we have to do. So we have calculated our Z value. Z is greater than equal to N. In that case we will do something, and if it is not equal to greater than equal to N, we will do something else. So in that manner I think we have properly written our logic. I have implemented our logic. Let's see it works or not. I think most probably it should work. Most probably it should work. काम कर जाओ यार, क्या आ गया? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट भाई दो का दो ही ना आएगा आंसर, दो क्यों नहीं आया? S प्लस ई माइनस एस बाई 2, सही बात है. मिड बाय A1, अगर ये ग्रेटर है तो E बराबर मिड माइनस 1. ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़े है. माइनस तो ठीक ही लिखे हैं यार. C और LC, क्या यार कहाँ गलती हो गया? लॉजिक काम क्यों नहीं कर रहा है? छः एलसीएम ठीक आ रहा है. S प्लस ई माइनस एस बाई 2, C और S E, C और S mid E indel.
and then C dot Z Johnny. Let's put it here. So like this. Let's see how the body stretch is working. It is not working properly. So 0, a mid value, so here we have to put it in the mid modulo a is equal to 0, yeah, mid modulo b and z equal to n. So it's working now. So that was the issue here. The logical operation was not working in that manner which we have thought about because of the bracket issue. So now it's working, as we can see. So it was not that much hard, but somehow there is a math and there is a use of algorithm. So we can say it was a better we can say it is little better, little good question we have. So it finally get accepted. So we can move to our next question we have. The next question we have, there are n workers, you are given 2 integer array quality and wage. So there are n workers and you are given 2 integer array quality and wage. Quality of I is the quality of the ith worker and wage of I is the minimum wage expectation of the ith worker. Minimum wage expectation of the ith worker. Okay. So you want to hire exactly k workers to form a paid group. To hire a group of k workers, we must pay them according to their following rules. Every worker in the paid group should be paid in the ratio of their quality compared to other worker in the paid group. And every worker in the paid group must be paid at least their minimum wage expectation. Very good. So given integer k, return the least amount of money you needed to form a paid group satisfying the above condition. Answer within 10 to the power minus 5 of the actual answer will be active. So we have to return a float value. So the expectation is that every worker has a quality value, that what is the quality of their work, and every worker has their expectation of wage, that you have to give at least that much amount of wage, then only he is going to work for you. So this is the condition we have given. So basically we want to hire k workers. Okay, we want to hire k workers, and the group and in the group of k workers you have to pay the workers in the ratio of their quality compared to other worker in the group. So if the quality is twice, let's say a worker quality is x and another worker has a quality 2x, and if you are paying y amount of money to the quality having worker x, then you have to pay what? You have to pay 2y amount of money to another worker, like that. That's the thing we have. And after paying, every worker should get their minimum at least expectation wages, at least wage of I salary. Now we want to minimize the least amount of money needed to form a paid group. So if you, what is the least amount of money you will need to make a group of k labor so that you can hire them, and fulfilling these two conditions you can hire them with minimum amount of money
you can do the things. So answer will be float. So you have to return 10 to the power minus 5 of the actual will be accepted, 10 to the power minus 5. So answer will be float type. So how can we proceed in the question? How can we proceed in the question? So let's talk a bit. So basically, let's talk about the constant we have. What is the constant we have given in the problem? So n is equal to 10 to the power 4. So the one thing we have very clear is that the number of lever is going to be less than or equal to 10 to the power 4. So we have to write a solution of order of n, n log n, n root n, like that. We have to do the things. Only then you can do the problem. So let's talk. So what we can do, we have n levers and each lever has some quality value. Ith lever has quality value, let's say qi, and ith lever expects some amount of wage. If you want to hire the worker I, then you have to pay at least wi amount of wage. That's it. So this is the, for each lever can be specified by two integer qi and wi. Every lever can be represented using two integer qi and wi. So this is the thing we have. Every lever can be represented in terms of qi and wi. Okay. So every lever can be represented as qi comma wi. Now we want to hire k lever and minimizing the salary. Now there are conditions how you can give the salary like that. So let's say you select some number, some lever you have hired, and the quality value of lever is like this: q1, q2, q3, qk, like this. So you can give the salary to each lever: q1 times x, q2 times x, q3 times x, comma qk times x. This much is the amount of salary you can pay to the labor. Okay. Then one more thing is that these all should be greater than equal to wi. These all should be greater than equal to wi. Also you can do one thing. As you know, the ratio, if the ratio of q1 by q2 is 1 by 2, then salary given to first person is s1 by s2, that is also be equal to 1 by 2. So to make the value of q1 times x, q2 times x, that is s1, s2, s3, s4, sk. So this is the amount of salary you have to pay to each lever. S1 amount of money you have to pay for the labor q1, and for q2 you have to pay s2, and for q3 you have to pay s3, and so on. For qk you have to pay sk. So you want to minimize this money without disturbing the ratio. So for that you want to find some factor which can be from, you want to find some number. What you can do, if you want to decrease the salary of each s1, s2, s3, sk, then you have to you can decrease it by some factor, by dividing with some integer. So you can divide these all salary with an integer, such that with an integer I, s1, s2, s3, you can modify the salary, decrease the salary of each level by dividing the salary of each lever by a single integer I, such that from I all integers should be get divisible. That's the case we have.
So you want to find, you want to minimize it as much as possible. You want to minimize it as much as possible. So for that, what you can do, you can find the largest integer from which these all numbers are divisible. So the greatest number from which these all integers are divisible is nothing but GCD of these all numbers. Very simple. So if you have selected some labor that is having quality value q1, q2, q3 and q2, qk, then what you can do, the minimum amount of salary you have to pay to each labor by satisfying the ratio condition. For that, you can just simply divide it by GCD of q1, q2, q3 and so on qk. You can divide it by these all things. Very simple. You can divide it by this value. So after this, after dividing this q1 will become q1 dash, q2 will become q2 dash, q3 will become q3 dash and so on, qk will become qk dash. Now if these all are greater than w1, it is greater than w2, it is greater than w3, it is greater than equal to wk. So this is a valid salary. Then what we can do, we can simply add these values, add these q values, and it will be the minimum amount of salary you have to pay if you want to pick this group of labor. This is the thing we have. Okay, now if at any one of the place it is violating the condition, then you have to find that what is the minimum integer you have to multiply so that all will follow the same condition. So for that, you can search, you can apply by research and find that. So we are not going to talk about that thing right now, because right now we are at the stage of problem where we don't need to resolve those things. First we have to talk how we can select the k person. So what are the choices we have? What are the choices we have? Let's talk about the range of k value, q value. So quality value will be less than equal to 10 to the power 4 and wage of I is less than equal to 10 to the power 4. K is less than equal to 10 to the power 4. So somehow we can think about, if we want to generate a subset of length k, then we can keep any labor in that set or we can't keep. So we have choices. So people can talk about choices, and if there is a talk of choices in the programming, then there will be always talk of dynamic programming. So if we talk about the dynamic programming scenario in this problem, then we can simply see that you are going to talking about the choosing k labor in among n labors. Among n labors, you want to take the case of choosing k labor. I am not right now talking about all the things that we have, what we have to compute. Let's talk about only picking condition. Then also you have to write a dp table of n cross k, because because you want to pick k elements from n elements, then you have to write a dp of n cross k, at least n cross k, because we are not talking about the things which we want to calculate, and for that it may be the case we have to keep something more in our transition state. So we are not going to talk about those things, but at least we have to keep na, and we have to make a table of n cross k, and n and k value will vary from 10 to power vary up to 10 to power 4. So space complexity will go 10 to power 8, and that is not optimal space complexity. So here dp solution is not going to work. So we have to do exactly something greedy, or whatever you can say, math like that. So let's talk about what we can do. Something math we can do, something greedy we can do. So I am going to continue my solving session. So we are at the question minimum cost to hire k workers. So we want to hire k workers and we want to minimize the cost. Okay, we want to minimize the cost.
So in which so we have talked about the greedy solution, we have talked about a DP solution which is not going to work here. So we have to think something mathematics or greedy like things. So and we have also discussed that we can write a solution of n root n, n log n, order of n. It will be better if you can write order of n. So likewise we can think of. So we want to minimize the wages. We want to minimize the cost of selecting k levers. So if there is a case of something minimizing, maximizing, we should definitely think of once. We should think of binary search. Can we do it or not? So let's talk about, can we do binary search? Can we do binary search? So if we talk about the binary search solution, if I am going to talk about the binary search solution, then what we can think that we want to find that what is the minimum cost in which you can what is the minimum cost in which you can hire k levers. So let's say the cost will vary from, your minimum value of cost will lie in the region 0 to, let's say, some region E, S to some region E. So that's what we are thinking of. So in binary search, as you know, we will have a mid value, and we will find that. So if we apply binary search, here the minimum cost will lie in the region so it should be a double value. So we have to apply the binary search, but binary search will be applied in the float region, in the double value. So your cost is not going to be the integer, s and e is not going to be integer, so your mid is also not going to be integer. So that's it we have. So let's find a mid value, and we will check that can we hire the k level in less than equal to mid. If we can check that, can we hire the k level in cost less than equal to mid, can we hire or not? If we can hire, then the checker function is going to return true, otherwise it is going to return false. So that's the basis of our checker function. So if the checker function is going to tell you true, then you will start searching in this region. If it is going to tell you false, then you will start searching in this region. So you will, in this way, you will, at each stage of your searching, you will reject one range and you will select one range, and ultimately you will reach at the minimum value finally. So everything depends in this problem is how can we able to build such type of checker function or not. So this is our main issue we have. So basically we want to find that can we build the checker function like that. The checker function should now let's talk about the complexity of checker function. So checker function has to solve this problem, has to find this true or false value in order of n log n, like that. This is the thing we have. Now how can we find that? How can we do that? Okay, how we can implement our checker function? So checker function has to check that is it possible to hire k levers in a cost of val. Is it possible to hire k lever in a cost of val, at a cost of val? Is it possible or not? This is the main thing we have. Can we find that or not? Are we able to find it or not? So this is the main problem we have. Can we find it or not? ठीक है. So we have n item, in those n item we want to select k item.
k item. So let's talk about one thing. So you have an item and you have an item, you have an item. Okay, so you have an item. These are the n item we have. So this is the quality value of each item. Okay, let's say you picked some key element from this and some picked some key value from this, some key item from this. Let's say you have selected all these items in the region S to E. You have selected all the items in the region S to E. You have selected. So if you select all the items in the region S to E, then what will happen? Then what will happen? What will be the minimum cost? So let's all add all these things. So Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 so on Qk. Let's all these things and multiply these all things with a double value as minimum as possible, with a double value, such that these all, so there will be w1 w2 w3, such that let's say that double value is d, so q1 into d is greater than equal to w1, like that. Okay, like that. So we have a double value like this. We have a, so basically so if we want to minimize the cost, if we want to minimize the cost, if we want to minimize the cost, so basically we are struggling in finding that is it possible to hire k laborers with x in x cost or less than x cost, k laborers. Okay, okay. So what we can think more? So we are struggling in finding the checker function. We are struggling. तो अगर हम बात करें कि हमारे पास क्या दिया हुआ, व्हाट वी हैव गिवन, हमको ये पता है कि हर एक लेबर का क्वालिटी वैल्यू क्या है और हर एक लेबर का W1 W2 ऐसे करके WN क्या है, ये हमको पता है दो चीज़. वी नो दीज टू थिंग्स. ठीक है, हमको ये दोनों चीज़ पता है. इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, हमको एक वैल्यू मिला है, डबल वैल्यू. हमको कुछ आदमी को सेलेक्ट करना है इसमें से, के आदमी को, और सबको कुछ ना कुछ वेज देना पड़ेगा. क्या वेज देना पड़ेगा हमको, सबको कुछ ना कुछ वेज देना पड़ेगा हमको, सबको कुछ ना कुछ, सबको हमको कुछ ना कुछ वेज देना पड़ेगा, सच डैट सबको हमको कुछ ना कुछ वेज देना पड़ेगा और के लेबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा. लेकिन उस वेज का समेशन क्या होना चाहिए, मिनिमाइज करना है, वो मिड से छोटा होना चाहिए. तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा. आप सोचिए कि आप इसको मान लीजिए कोई इंटीजर आए. अच्छा एक चीज़ बताइए, इसका क्वालिटी वैल्यू क्यू है, Q1 है और W1 है.
मान लीजिए इसको आप किसी चीज़ से गुना करना चाहते हैं, किसी फ्लोट वैल्यू से, सच डैट ये इससे बड़ा ही हो। Q1 जो है ना, Q1 इंटू डैट फ्लोट डबल वैल्यू, ये हमेशा बड़ा हो या बराबर हो W के। तो ये D तो निकाल सकते हैं आप हर एक के लिए। तो अब हमारे पास एक ऐसा टेबल हम बना सकते हैं, Q1 D1 W1, सच डैट Q1 इंटू D1 इज इक्वल टू W1। ठीक है, ये चीज़ हम हर एक के लिए फिर निकाल सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी आई को कैसे हम डिफाइन किए गए हैं। डी आई एक डबल वैल्यू है, सच डैट Q1 बाय W1। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया कि डी आई क्या है बताइए, Q1 इंटू D1 इज इक्वल टू W1। ये वही वैल्यू है डी। तो आप सबके लिए ये डी वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये इस तरह से Q1 DN WN, ये इस तरह से चीज़ है। ठीक है, तो ये इस तरह से चीज़ है। तो अपने को ये पता है, इसको कोई भी सेलेक्ट करे। अब आप सोचिए कि आप निकालना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस x से कम में के लेबर सेलेक्ट हो जाए। के लिए हमको क्या करना है, क्या करना है हमको, आप सोचिए कि इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं एज ए लेबर, तो आपको, आप सोचे थे ना, आप सुने थे ना, हम लोग बात किए थे कि के लेबर सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए तो सबका क्वालिटी वैल्यू गुना कीजिए, कोई इंटीजर एक्स से गुना कीजिए, कोई फ्लोट वैल्यू एक्स से गुना कीजिए, डबल वैल्यू। ठीक है, सबको, ठीक है, सबको एक डबल वैल्यू एक्स से गुना कीजिए, सबको एक डबल वैल्यू एक्स से गुना कीजिए। तो यही आपका जो है टोटल कॉस्ट होगा के लेबर सेलेक्ट करने का। तो यही आप जो है इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, इस वैल्यू को अगर मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, आप यही मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कुछ Q वैल्यू चुनिएगा N वैल्यू में से, Q3 प्लस Q4 ऐसे करके Qk, यू वांट टू पिक सम ऑफ द के क्वालिटी वैल्यू एमंग N क्वालिटी वैल्यूज, और इसको आप चाहते हैं कि कोई डबल x से गुना करे, सच दैट ये तो यही आपका कॉस्ट होगा ये लेबर हायर करने का। और शर्त ये है कि ये जो x है ना, जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ये जो x वैल्यू है ना, उसके di से x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू di फॉर ऑल I बिलोंग्स टू 1 2 3 4 k। मतलब जिसका आप फॉर ऑल I बिलोंग्स टू selected लेबर, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू सेलेक्टेड लेबर, ऐसा हम बोल सकते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये मैथ का इक्वेशन हो गया अपने पास। अच्छा, इस चीज़ का वैल्यू, अगर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है घटाना है, तो आप कोशिश कीजिएगा ये भी घटे और ये भी घटे। बहुत ही सिंपल सा बात है, ये भी घटे और ये भी घटे। ठीक है, ये भी घटे, ये भी घटे। तो देखिए, आप सोचिए कि इसको बड़ा होना है इसमें से सब कुछ, तो आप चाहेंगे, ये तो बड़ा चक्कर हो गया, बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ रहा है एक साथ। वी हैव टू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजन एट द सेम टाइम। क्या कर सकते हैं।
x is greater than equal to di। क्या कर सकते हैं? तो बाइनरी सर्च लगाए हैं। इफ़ वी हैव अप्लाइड द बाइनरी सर्च, तो इस वैल्यू को हम लेस देन इक्वल टू एक वैल्यू वैल से रखना चाहते हैं, नहीं ना? तो कैन वी सेलेक्ट तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, जो सेलेक्ट किए हैं ना इसमें सबसे बड़ा वाला किसी का डी होगा तो सबसे बड़ा होगा। तो ये जो सेलेक्ट कीजिएगा ना आप क्यू वैल्यू, तो उसमें से उसका डी से गुना करिएगा। एक्स क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ ऑल डी आई, सारे डी आई में से जिसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, सेलेक्टेड फॉर ऑल आई। जो भी आप सेलेक्टेड आपका लेबर है, ith लेबर आपका सेलेक्टेड है, ऐसा करके बहुत सारा लेबर आप सेलेक्ट कीजिएगा। i1 i2 i3, इसको ऐसे लिखते हैं, i1 i2 i3 i4 ik। ये सब लेबर है, इंडिसेस ऑफ लेबर है जिसको आप सेलेक्ट किए हैं। इस सब इंडिसेस में से डी आई जे, ठीक है, आई जे और ऑल जे बिलोंग्स टू 1 to k। इस सब में से जो डी आई जे में से जो मिनिमम होगा ना, डी आई जे में से जो मिनिमम होगा ना, डी आई जे में से जो मिनिमम होगा, डी आई जे में से जो मिनिमम जिस इंडिसेस का, मतलब जिस ये जो सेलेक्टेड लेबर्स है उसमें से किसी सेलेक्टेड लेबर का मैक्सिमम डी का वैल्यू होगा, वही डी यहाँ पर एक्स की तरह बिहेव करेगा, एक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। वही डी आपका एक्स की तरह काम करेगा। वही डी आपका एक्स की तरह काम करेगा। ये बात तो समझ गए? वही डी आपका एक्स की तरह काम करेगा। तो अगर आप तो अगर हम सोचिए कि सारे क्वालिटी वैल्यू को हम डी के रेस्पेक्ट में सॉर्ट कर दें, डी के रेस्पेक्ट में, मतलब डी कॉमा डी आई कॉमा क्यू आई का पेयर बनाएं, ठीक है। और इस तरह के पेयर को आप अगर सॉर्ट कर दें, इफ़ यू आर गोइंग टू सॉर्ट सच टाइप ऑफ पेयर, इस तरह के पेयर को आप पूरी तरह से सॉर्ट कर देते हैं। लेट्स से यू सॉर्ट ऑल द पेयर्स लाइक दिस। अगर आप सॉर्ट कर देते हैं तो क्या होगा? सोचिए, यहाँ तक में से अगर आप की एलिमेंट चुनने का बात कर रहे हैं इन दिस रीजन, इफ़ यू वांट टू पिक के एलिमेंट्स, तो अगर आप के एलिमेंट्स पिक करने का बात कर रहे हैं इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में अगर आप के एलिमेंट पिक करने का बात कर रहे हैं, ठीक है, इस रीजन में आप अगर के एलिमेंट पिक करने का बात कर रहे हैं, तो उसका जो एक्स वैल्यू होगा ना, उसका जो एक्स वैल्यू होगा ना, वो इस एलिमेंट का जो डी का वैल्यू होगा, लेट से डी जे, उतना के बराबर होगा। एक्स तो डी जे के बराबर होगा। अब इस रेंज में से के आपको चुनना है, तो उस के को चुनिए जो क्यू मिनिमम दे रहा है, जिसका क्यू वैल्यू मिनिमम है। जाहिर सी बात है, क्योंकि तभी ना आप, अच्छा तो आप इसको ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं, हाँ इस तरह का से, तो आप ऐसे कर सकते हैं, हाँ वी कैन डू लाइक दैट। हम इस तरीक़ा से कर सकते हैं जी, कि हमको यहाँ तक में हम डी का वैल्यू इतना रखना चाहते हैं एट मैक्स। अब इस रीजन में के एलिमेंट का क्वालिटी वैल्यू का मिनिमम सम कितना होगा, यही हमको चाहिए इस रीजन में। किसी रीजन में के एलिमेंट का मिनिमम सम क्या होगा, क्वालिटी वैल्यू। इस चीज़ को कैसे निकाला जा सकता है? इस चीज़ को कैसे निकाला जा सकता है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक में आपको के क्वालिटी वैल्यू का समेशन पता है, के का समेशन, के एलिमेंट्स का समेशन आपको पता है, मैक्सिमम समेशन, और आप इस एलिमेंट को अब इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसमें से जो सबसे बड़ा वाला था, सबसे छोटा वाला था, सबसे बड़ा वाला जो इसमें इंक्लूडेड है, उसको हटाइए और इसको डाल दीजिए। यही ना हमारा
उद्देश्य होगा, हमारा उद्देश्य तो यही होगा भाई। तो हम के मिनिमम एलिमेंट हम रखना चाहते हैं, यही ना, के मिनिमम एलिमेंट हम यहाँ से यहाँ तक लेके चलना चाहते हैं। हमेशा हमारे पास के एलिमेंट हम रखेंगे, के एलिमेंट हम हमेशा रखेंगे। मान लीजिए एक झोला है मेरे पास, मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, आई हैव अ बैग एंड I will start putting the Q value. Once the Q value reach the value, when I reached index K, I will have K Q values. So now if I have to take all the Q values, because I want to hire K labor now, but the maximum value among those K labors will have some maximum value of T, which will be at the labor present at this index. Very simple, this index. So if I want to hire all these K labors, the amount of money I have to pay is nothing but summation of quality value of all those K labors, and all that quality value is in my bag. So the quality value present in my bag, summation of those quality value times the D value of the last element. After picking this, we will reach here. Now I have K, I have in my bag K numbers, but I want to remove one number and put this number. So I will find if there is a number which is greater than this, the quality value of this number. If there is at least one Q quality value present in my bag which is greater than the quality value present at this place, then I will remove one of the largest one quality value from the bag and put it in the bag. That's what I am going to do. Again our summation will change, and then I will multiply with this D value at this index, and in this way I will start iterating and reach the last index. And when I reach the last index, each time I will find each time I will find जो कितना हमको जो है पैसा देना पड़ेगा के लेबर्स को हायर करने के लिए। each time I will find, हर बार हम किसी इंडेक्स पे पहुंचेंगे और हम वहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक में अगर हमारे पास ये पता रहेगा कि के एलिमेंट्स का मिनिमम क्वालिटी वैल्यू का समेशन कितना है, उसको फिर डी से गुना करेंगे। अब देखेंगे कि अगर मिनिमाइज हो रहा है तो ठीक है, मिनिमाइज हो रहा है तो क्वालिटी वैल्यू, मतलब मिनिमाइज हो रहा है कोस्ट, तो मिनिमाइज करते जाएंगे कोस्ट को इस तरीका से। तो हम जो है थोड़ा एक अच्छा से बात करते हैं हिंदी में, ठीक है, हिंदी में शुद्ध बात करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास डी वैल्यू निकालना हमने सीखा है, तो क्यू कॉमा डी का पेयर बनाया, क्यू कॉमा डी का पेयर बनाया, ठीक है, क्यू कॉमा डी का हमने पेयर बनाया। सो आई हैव मेड द पेयर ऑफ क्यू कॉमा डी, और उसके बाद हमने इसको डी के आधार पे सॉर्ट कर दिया, डी का छोटा वैल्यू, फिर बड़ा वैल्यू, फिर बड़ा वैल्यू, बड़ा वैल्यू, तो डी के बढ़ते क्रम में सॉर्ट कर दिया मैंने इस पूरे एरे को। पेयर है, मैं के इंडेक्स पे आया, के इंडेक्स तक में, तो यहाँ से यहाँ तक में के एलिमेंट ही है, तो के लेबर हमको हायर करना है, तो सारा लेबर को हायर करना पड़ेगा। अगर सारा लेबर को हायर करना पड़ेगा तो सारे लेबर का क्वालिटी वैल्यू का समेशन, यहाँ से यहाँ तक में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है सबके क्वालिटी वैल्यू का समेशन, ठीक है। तो आपको क्वालिटी वैल्यू का समेशन सिग्मा, क्वालिटी वैल्यू का समेशन यहाँ से यहाँ तक में मिल गया एक्स, ठीक है। तो आपको अगर सबको हायर करना है तो इस सब में से जिसका मैक्सिमम डी वैल्यू होगा उतना से गुना करना पड़ेगा, तो एक्स इंटू डी, और डी आपको पता है इस एलिमेंट का सबसे मैक्सिमम क्योंकि सॉर्टेड है। तो अगर आप इस के लेबर को हायर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इतना कॉस्ट लगेगा भाई, इतना दाम लगेगा। अब इसी दाम को तो मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक में अगर के एलिमेंट के लेबर चुनना चाहते हैं, फिर वही बात है, आपके पास के लेबर है ना, इसमें से आप एक लेबर को हटा के ये वाला लेबर ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते हैं। लीजिएगा कब, क्वालिटी वैल्यू के समेशन को मिनिमाइज तो करना चाहते हैं ना आप, एक्स को मिनिमाइज करना चाहते हैं, यू वांट टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर एक्स को मिनिमाइज करना है तो क्वालिटी वैल्यू के समेशन को मिनिमाइज करना पड़ेगा, और यहाँ तक में तो के लेबर था ही है, वी हैव के लेबर टिल नाउ। अब इसमें से हम एक लेबर हटा के इसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हमको इंक्लूड करने से अगर एक्स का वैल्यू घटेगा तभी हम हटाएंगे। तो एक्स का वैल्यू कब घटेगा, जब इस जितना हम लेबर सेलेक्ट किए हैं यहाँ से यहाँ तक में कोई एक ऐसा लेबर हो जिसका वैल्यू, जिसका क्वालिटी वैल्यू ज़्यादा हो इस इंडेक्स पर प्रेजेंट एलिमेंट के क्वालिटी वैल्यू से। अगर ऐसा एक भी लेबर है तो उस लेबर में से बहुत सारा लेबर होगा जिसका क्वालिटी वैल्यू मान लीजिए इसके क्वालिटी वैल्यू से ज़्यादा है इस गिवन के लेबर्स में, तो उसमें से सबसे मैक्सिमम क्वालिटी वैल्यू वाला लेबर को हटा देंगे और ये वाला को डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो नया समेशन बनेगा, जो हम हटा के फिर से हमारे पास के लेबर है और उस के लेबर के क्वालिटी वैल्यू का समेशन फिर से समथिंग x1 आएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमने इस बार जो लेबर सेलेक्ट किया है वो इस रीजन का लेबर सेलेक्ट किया है, ठीक है, इस रीजन का हमने लेबर सेलेक्ट किया है, तो हमको जो डी वैल्यू देना पड़ेगा
वो देना भी पड़ेगा इस एलिमेंट का जो डी वैल्यू होगा उतना बराबर। तो इतना से गुना करेंगे, हमको मिल जाएगा कि अगर इस रीजन में हम के लेबर सेलेक्ट करते हैं तो हमको कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको पता चल जाएगा। और ये एक बार पता चल गया तो इस तरीका से हम हर एक के लिए निकाल सकते हैं। के लेबर चुनने से कितना आपका जो है क्या हो रहा है, आपको के लेबर चुनने के बाद कितना आपको कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, और उस सारे हर बार जो आप कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, उसमें से जो मिनिमम कॉस्ट होगा वही आंसर होगा। So that's the problem. So we have finally decoded the solution of this problem. So it was a pretty good problem. You can say this is a pretty good अच्छा सवाल है ये. It is a good question. तो चलिए हम जो है उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्या था हमारे पास कि क्वालिटी वैल्यू और क्वालिटी वैल्यू और क्या, और हम एक वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ डबल कॉमा डबल बनाते हैं। ठीक है, डबल कॉमा डबल, इसका नाम रखते हैं वी। हम आइटरेट करते हैं और इंट आई बराबर 0 आई लेस देन क्वालिटी डॉट साइज, और फिर हम करते हैं आई प्लस प्लस। तो हम ith लेबर के पास आ चुके हैं। सो मान लीजिए मैं एक डबल क्यू बनाऊँ, डबल ऑफ क्यू का वैल्यू मैं करूँ क्वालिटी ऑफ आई, और इसी तरह से मैं एक और डबल बनाऊँ, लेट्स से डबल ऑफ क्या बनाऊँ, एक और डबल बनाता हूँ वेज के लिए, दैट इज़ डब्लू, और ये कुछ और नहीं होगा, वेज ऑफ आई ही होगा। तो आपके पास दो डबल वैल्यू है, इस दोनों का यूज़ करके आप एक डबल वैल्यू आप डी जनरेट करना चाहते हैं जो कि डब्ल्यू बाई क्यू के बराबर होगा। तो डब्ल्यू बाई क्यू, वेरी सिंपल। अब आप चाहते हैं इस भी में, इस वेक्टर में पुश बैक करना डी कॉमा क्यू को, डी कॉमा क्यू को आप करना चाहते हैं पुश बैक। आपने कर दिया, बहुत सिंपल सा बात है जी। ठीक है, तो आपने इतना कर दिया, एक मिनट। So you can see the logic we have talked about. I have implemented that logic, you can clearly see. So I am just decreasing the size so that it can be lookable in this size. So we can see that very simple things I have done. I have inserted all the pairs in my vector, then sorted the vector according to the increasing order of d value. Then I have made a double type of variable answer. I have stored initial value in that 10 की power 9.00000 like that, and then we have a double sum, and I have a multi-set of double. Then I start iterating over the vector we have made, sorted vector. Then if index number of element we have in the multi-set, if it is less than k, then I am simply inserting. That value in the set, and the sum of the whole multi-set is going to be that is I am storing in the sum value, that I am maintaining in the variable sum. So I am incremented the sum variable by v of I dot second. That is, so currently the number of elements which I have selected is less than k. That means the number of labors which I am going to hire is less than k. Then I have to select now. So I have selected. So if I am selecting, then quality value is get increased by v of I dot second. So sum is increase. That's why the value of sum I am increasing by v of I dot second. And after that, as I have selected the v of I dot second labor, ith labor having quality value v of I dot second. That's why I have to insert it in the multi-set, so I am inserting it. Let's say if I equal to k minus 1, that means at the current situation is that the number of labor you have is k, selected labor you have exactly k. Then if you are going to hire all these k labors, then the quality value of all the labor is going to be equal to sum, and the d value you have to take is v of I dot first, that is the d value of the ith labor. That's why your answer will be minimum of answer comma sum into v of I dot first. So this is the currently you have in multi-set, currently you have some number of elements,
that is some number of elements now, exactly k number of elements, and those all elements represent a labor, and the summation of all the quality values of all those k labor is sum, and the d value which you have to take is v of I dot first. So if you talk about the total cost you have to pay so that you can hire all these k labor which you have in the multiset right now is nothing but sum into v of I dot first. So that's why I am minimizing the value of answer with this value. And after that, if you are in the else case that you already have k labors in your set, now you are currently at I. So if we can decrease the summation of quality value by including the labor which is present at ith index, and we will remove some of one labor from the set and we will pick this labor in the set, we want to do that. So for that, if the quality value some value is going to decrease by doing that, then only we will include this labor which is present at ith index. So for that you can simply check that. So I am making a pointer auto it is equal to st dot in, so it is pointing at the after the last element of the multiset. So I am decreasing this pointer by 1, and if I have decremented this pointer by 1, then it is going to point the last element, and last element will be the maximum element in the multiset, and that means you are currently at a labor which has the maximum quality value, and if that quality value is greater than the quality value of the current labor, that means if you will remove this last labor from your multiset and pick the ith labor which you are currently at in your multiset, then it is going to decrease your sum value. So sum value will decrease by star it, and so I have decremented the sum value by star it, you can clearly see. And after that you have removed one labor from your multiset from your set, so you will pick one labor which is at currently at ith index, and to pick that labor what you can do, simply increase the sum value by v of I dot second, that is the quality value of the current labor which you are currently inserting by removing one labor from the multiset. So after that your sum value will get maintained, but you have to remove that labor which you want to remove now, last labor you want to remove. So st dot erase it, I have removed the last labor, and after removing the last labor you have to also insert the ith labor because you have picked this ith labor in your set now. So st dot insert v of I dot second, so I am inserting the quality value of this the ith labor, and after that we will have some value, and we will have some d value, and d value is the d value of the ith labor, and d value of the ith labor is v of I dot first. So sum into v of I dot first, so answer equal to minimum of answer comma v of I dot first. So in this way, after running these whole things, you should expect that your answer variable is going to store the minimum amount of cost you will require to hire k labor from your labor set. So you have a set of labor which consists of n labors. In those n labors you want to pick k labors such that you can minimize the cost of hiring those k labors. So we can do like that. So if I will run it, I have run it before, it was working on the example test cases. Let's see, but I didn't have run on the all example test cases. Let's see it works or not. I think it should work, most probably it will work. So it is working, you can see. So I am going to submit it. It should work, it will accept it, I think. So it is accepted. So we can move to our next question. So our next question is Zuma Game. So from which section I have taken this game? I think it is from the DP section we have. So let's read the problem statement first. So you are playing a variation of the game Zuma. Okay. So in this variation of Zuma, there is a single row of colored balls on a board where each ball can be stored red, yellow, blue, green, white. So in this variation of Zuma, you are playing a variation of game Zuma. In this variation of Zuma, there is a single row of colored balls on a board where each ball can be colored red, yellow, blue, green, white. So you also have several colored balls in your hand.
Okay, so your goal is to clear all of the ball from the board on each turn. So pick any ball from your hand and insert it in between two ball in the row on either end of the row. तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको जो है एक जुमा गेम है, इसका बहुत सारा वेरिएशन है। तो हम जो वेरिएशन खेल रहे हैं इसमें एक सिंगल रॉ है कलर्ड बॉल्स का, बोर्ड पे रखा हुआ है। फिर ईच बॉल कैन बी कलर्ड रेड, कैन बी कलर्ड रेड। तो जो बॉल है वो तो रेड कलर का हो सकता है, येलो का, ब्लू, ग्रीन और व्हाइट। तो 5 कलर का बॉल हो सकता है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट। इसके बाद है योर गोल इज टू क्लियर ऑल द बॉल्स फ्रॉम द बोर्ड ऑन ईच टर्न। ठीक है, तो हमारा गोल है कि क्लियर ऑल बॉल, हमको सारे बॉल को क्लियर करना चाहते हैं हर एक टर्न में। तो पिक एनी बॉल फ्रॉम योर हैंड एंड इंसर्ट इट इन बिटवीन टू बॉल इन द रॉ और ऑन आइदर एंड ऑफ द रॉ। तो बोल रहा है कि पिक एनी बॉल फ्रॉम योर हैंड। तो आप जो है अपने हाथ से जो है कोई भी बॉल पिक कीजिए एंड इंसर्ट इट इन बिटवीन टू बॉल इन द रॉ। ठीक है, पिक एनी बॉल फ्रॉम योर हैंड एंड इंसर्ट इट in between two ball in the row or on either end of the row. If the group of 3 or more consecutive ball of the same color, remove the group of the ball from the board. If the removal causes more group of 3 or more of the same color to form, then continue removing each group until they are none left. So if there are no more ball on your board, then you win the game. Repeat this process until you either win or do not have any more balls in your hand. So we have some number of ball in my hand, okay, and the initially I have some number of balls in my hand, and the ball can be any of the color from the given colors. That is, it will be of the color whatever you can say, it can be of some color. So we have given initially we have some number of balls given and there are some number of balls present on the board. What you can do, you can pick one ball from your hand and put it in between any two balls on the board, or put it at the right end or left end. And after putting that ball, if 3 or more consecutive ball of same color, अगर 3 या 3 से ज़्यादा consecutive ball same color का हो जा रहा है, तो रिमूव द ग्रुप ऑफ बॉल फ्रॉम द बोर्ड। तो आप जो है बोर्ड पे से जो है उस ग्रुप ऑफ बॉल को रिमूव कीजिए। इफ देयर इज अ ग्रुप ऑफ 3 और मोर कंजिक्यूटिव बॉल ऑफ द सेम कलर, रिमूव द ग्रुप ऑफ द बॉल फ्रॉम द बोर्ड। ठीक है, इफ द रिमूवल कॉजेज मोर ग्रुप ऑफ 3 कंजिक्यूटिव और मोर बॉल्स टू फॉर्म, देन कंटिन्यू रिमूविंग अंटिल दे आर नॉन लेफ्ट। अगर ऐसा करने से हो सकता है कि और सारा भी जो है बॉल जो है सेम ग्रुप का 3 या 3 से ज़्यादा बॉल जो है मर्ज होने लगा हो, तो वो सबको भी फिर आप हटाइए इस तरीका से। ऐसे कर करके इस काम को तब तक कीजिए until you are non left। अगर तब तक आप कीजिए जब तक बॉल बोर्ड पर कोई बॉल न रह जाए, बॉल नहीं रहे। सो इफ द रिमूवल कॉजेज मोर ग्रुप ऑफ 3 कंजिक्यूटिव, ठीक है, इफ देर आर नो मोर बॉल्स ऑन द बोर्ड देन यू विन द गेम। अगर बोर्ड पे कोई बॉल नहीं है तो आप गेम को विन कर गए। अदरवाइज आप इस प्रोसेस को तब तक कीजिए जब तक कि either you win or do not have any more ball in your hand। तब तक आप इस प्रोसेस को कीजिए जब तक कि आपके हाथ में कोई गेंद है। अगर सारा बोर्ड पर से गेम खत्म हो गया, गेंद खत्म हो गया, तो आप जीत गए। नहीं तो आप तब तक खेलते रहिए जब तक पूरा आपका गेंद खत्म नहीं हो जाए, हाथ में जो बॉल है आपके पास। तो यही बात है। तो given a string board representing the raw balls on the board and a string hand representing the ball in your hand, return the minimum number of ball you have to insert to clear all the balls from the board। if you cannot clear all the balls from the board using the ball in your hand, return -1। अच्छा, आपको ये बताना है कि मिनिमम कितना बॉल का यूज करके जो है आप जो है इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, पहला बात तो ये आपको बताना है। उसके बाद ये बताना है कि इफ यू कांट क्लियर ऑल द बॉल यूजिंग योर ऑल बॉल इन योर हैंड, देन रिटर्न -1। इफ यू विन, tell me the minimum number of ball you will require to win the game। if you lose, return -1। so that's it we have। so one very good thing is that we have only 16 balls initially on my board and 5 in my hand। so this is the initial situation of our game। the game is at
वेरी गुड सिचुएशन। 2 की पावर 16 बोले तो 2 की पावर 16 इज ए वेरी गुड नंबर। तो 2 की पावर 16 तो बात यह है कि हम स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी बॉल से हम स्टार्ट कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी ऑफ द बॉल। 2 की पावर 16 कितना होता है? हाउ मच इज द 2 की पावर 16 वी हैव? 2 की पावर 16 कितना होता है? ये रहा अपना 2 की पावर 16। लेट्स सी हाउ मच इट इज। 6 इंटू 10 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 32। तो इसको अगर हम बात करें, तो अगर हम 6 5 5 3 6, इसको अगर हम गुना कर दें, इसको गुना कर दें हम 32 से, ये इतना हो जाएगा 3 3 6, 2 इंटू 10 की पावर 6। तो हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, डीपी विथ विथ मास्किंग का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। वी कैन राइट ए सॉल्यूशन ऑफ डीपी विथ विथ मास्किंग। कोई दिक्कत नहीं है, डीपी का ही ये है, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। डीपी का सॉल्यूशन इसका लिखाएगा, ठीक है। इसके बाद ये है, उसके बाद 3 सवाल अपने पास और है। आफ्टर दिस क्वेश्चन वी हैव already some more question, 3 questions we have. So we were at the question Zuma game. So how can we implement this question? So basically if we start the question, it is simple learning programming question it seems. So we can think of the transition while writing the problem. So let's say what will the situation in the game? Situation in the game will be very simple, that you will have a mask 1 and you will have a mask 2. Mask 1 is basically the mask representing the board, and the mask 2 is the mask representing the hand. So board comma hand. So basically in mask there will be exactly equal number of bits. Basically in masks the number of bits will be just equal to the number of bits on the board. In mask 1, number of elements on the board is equal to the number of bits in the mask 1, and number of elements in the mask 2 is equal to the number of elements in the hand. So some bit will be set in the mask and some bit will be not set in the mask. The bit which is set in the mask, the corresponding element in the on the board is get deleted, and the corresponding element in the hand is used. So when every element of the mask 1 is set, that means there is no more element on the board, and if no more element on the board, then who is going to win? The Zuma is going to win. The player is going to win the game. And if there is some elements, there is not all elements set on the board, and every elements get deleted from the hand, that is every bit is set in the mask 2. That means lose the game. Player doesn't win the game. So int x equal to something. Int x equal to something. Okay. So int x equal to something. So we have to. So let's say we have used all the things, but can't able to delete all the characters present on the board. That means you lose the game. So if x is the minimum number of, what you are expecting from this function? From this function you are expecting what is the minimum number of elements you have to delete
so that you can win the game. So that's your target. That is your target you have basically. So the target is basically we will use minimum number of elements present in our hand, and we are able to delete all the characters from the board. And let's say the function f is going to tell you that, give you that. So x is the value of that. So x is if x is greater than hand dot size. So basically the function is telling you that the number of elements, minimum number of elements required, which is greater than the elements you have in your hand, that is hand dot size. So if x is greater than hand dot size, that means you are unable to delete all the character. In that case you have to return -1. Otherwise you have a value x, which is the minimum amount of ball present in your hand. You will need to delete all the characters from the delete all the balls from your board. In that case return x. So I was referred many times our balls with a name character. So I have told many times ball a character. So no problem, we know the things what I have talked. Okay, no problem. So our function is going to return an integer value, and the argument it is going to take a mask 1 and a mask 2. That's the main thing we have. Okay, that's the main thing we have. Now we have okay, so and we have two string, and so I'm making it reference because many times there will be recursive call, and if there is a recursive call, it may be the case there will be a lot of times of copying the string, and it will take a lot of time complexity and space complexity. So I'm making it a reference of board, so by string reference of what hand. Okay, now what next? What next we have? So basically we have some choices. We have some choices because we have something in our hand and we can use that ball. So we have some number of balls. At this stage of game there will be some number of balls which we have in my hand, and I can use one of them at the moment. So I will try to use the among them I will use first those balls which is going to delete all the ball on the board, and using that ball at the moment will minimize the number of further use of the balls. That's the main target we have. So initially the mask 1 is equal to 0 and the mask 2 is equal to 0. So we were talking about the target. The target is very simple. You are currently at a stage in this game in your recursive function call. At this stage you have some number of balls in your hand and some number of balls left on the board, and you want to use, you have some choices now. You can use either one of the ball which is present in your hand, but you will use one of them which is going to give you the minimum number of use of ball after the use of that ball. Okay, that is our main motive. So let's have a function call. So for int I equal to 0, I less than hands dot size I plus plus. Okay, hands dot size I plus plus. So you are currently talking about the ith ball which is in your hand. So first check that is that ball you have used already or it is in your hand. How can you check that? One left shift I and take the end with mask 2 and check it. Is it equal to is not equal to 0? That means is equal to 0. That means you have, there is a clear case that you have used that ball ith. So if you have used, if it is equal to 0 you have used, so you can't use it at the moment.
So if you can't use it at the moment, then what will happen? Then what will happen? Huh? Now the thing will be very simple. The thing is very simple, that you can now use it. You can now use it. So there are various choices, that where you can place the given ball in the string. There are some choices that at which index you want to place the ball. Huh? There are choices at which index you can put the ball, but you will select that choice which is going to minimize. So we were talking about how we can move from here, that we have the choice that we can put this ball, ith ball, which is in our hand, at any of the index. We can between any two balls in the board string. Okay, board string. Okay, board string we can put at any of the index between the board axis. So how we can move from here? How can we proceed from this point? We haven't talked yet about the complexity. We have talked about the complexity and number of states we have, but we haven't talked about other things. तो हम यहाँ पे थे कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं आगे. सो सिचुएशन क्या है हमारे पास? हमको ये पता है कि आयथ जो बॉल है मेरे पास हैंड में, उसको हम अभी रखना चाह रहे हैं. तो हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें से कुछ चीज़ डिलीटेड है, कुछ नॉट डिलीटेड है. तो हम इसको एक स्ट्रिंग ऐसी बना लेते हैं. तो कुछ चीज़ डिलीटेड है इसमें, कुछ चीज़ नहीं डिलीटेड है. जो चीज़ नहीं डिलीटेड है उस कैरेक्टर को केवल निकाल करके हम एक स्ट्रिंग तो बना ही सकते हैं. मान लीजिए हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं. हम उसको एक स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है. एक स्ट्रिंग बना लेते हैं. अच्छा एक मिनट, मतलब बात वही है कि आप जो है ना, आप जो है ना ऐसा नहीं है कि आप जैसे यहाँ पर आपने एक एलिमेंट चुना, उसको किसी इंडेक्स पे रखा, उससे आपका स्ट्रिंग चेंज हो रहा है, ठीक है. स्ट्रिंग चेंज हो रहा है और फिर नया स्ट्रिंग पे आप जो है नया स्ट्रिंग में फिर से आप इंसर्ट कर सकते हो. इस तरह से ये चीज़ चेंज भी हो रहा है, स्ट्रिंग चेंज भी हो रहा है, स्ट्रिंग चेंज भी हो रहा है. ऐसा नहीं है कि आप एक ही को रख दीजिएगा, फिर आप इसके बाद एक को और रख सकते हैं, जहाँ पे मन हो वहाँ रख सकते हैं. ये सिचुएशन है, इस तरह का सिचुएशन है. इस तरह का सिचुएशन है, तो इसको कैसे किया जाएगा? कैसे किया जाए इस सिचुएशन को टैकल? हाउ कैन वी टैकल दिस सिचुएशन?
तो कैसे किया जाए? हमें को यही है ना कि हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, एक इसमें कुछ बॉल है, एक और स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें कुछ और बॉल है। हम इसमें से किसी बॉल को उठा के यहाँ पे कहीं रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं रख सकते हैं, यही है, यहाँ पर कहीं रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, बीच में जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। और रखने से क्या होना चाहिए ना, रखने से क्या होना चाहिए, रखने से एक नया स्ट्रिंग बनेगा। इस नया स्ट्रिंग में कुछ चीज़ हो सकता है, 3 कंजिक्यूटिव बॉल सेम कलर का आया तो उसको डिलीट कर सकते हैं आप, 3 या 3 से ज़्यादा, उसको डिलीट कीजिएगा आप, ऐसे कर करके आप डिलीट करिएगा। यू विल डिलीट द थिंग्स लाइक वाइज, ऐसे कर करके आप डिलीट कीजिएगा। ठीक है, ऐसे कर करके आप डिलीट कीजिएगा। ऐसे कर करके आप डिलीट कीजिएगा और अंत में बोर्ड पर का चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे ही आप एक रखिएगा, देखिए ऐसा है कि इनिशियली कंजिक्यूटिव 3 या 3 से ज़्यादा जो भी आएगा सेम कलर का वो तो फट जाएगा, तो सब बॉल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा वो सब कनकैटिनेट हो जाएगा, फिर वो डिस्ट्रॉय होने का कोशिश करेगा। यही सिचुएशन है इस खेल का। सिचुएशन ये है, आप सोचो कि आप कब आपको 2 डालने का ज़रूरत है, जब भी आप 2 बॉल यूज़ करोगे ना तो सेम कलर का ही यूज़ करोगे। तो बात यह है, आप ये नहीं सोचोगे किसी मोमेंट पे कि आप ये नहीं सोचने वाले हो किसी मोमेंट पे कि इसमें से कौन सा बॉल यूज़ करोगे उसके बाद कौन सा नहीं। आप ये सोचो इसमें से आप किस कलर का बॉल यूज़ करोगे, विच कलर यू आर गोइंग टू यूज एट द मोमेंट। और उस कलर का यूज़ करने के लिए आपको किसी एल कॉमा आर के बीच में अगर आप बॉल को रखना चाहते हैं तो आपको उस कलर का क्या ठो बॉल रखने से फट जा रहा है चीज़, वही रखिएगा, नहीं तो क्यों रखिएगा। सिंपल सा बात तो यही है। अच्छा, आप उसी को रखिएगा, नहीं तो क्यों रखिएगा, सही बात है। यही हमारा सिचुएशन है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बॉल है, तो आप एक बॉल रख के हो सकता है कि आपका काम बन जाए, किसी कलर का एक बॉल रखने से काम बन जाए, या हो सकता है 2 रखने से काम बन जाए, या हो सकता है कि 3 रखने का कोई ज़रूरत नहीं, मतलब नहीं है। तो आप एक रखोगे या 2 रखोगे किसी सेम कलर का, यही सिचुएशन है अपने पास कि हम या तो एक बॉल का यूज़ करेंगे या तो 2 बॉल का यूज़ करेंगे। क्योंकि सोचिए ना, कहीं पर ऑलरेडी 3 ठो होगा तो वो तो फट चुका होगा। हाँ, कहीं पर ऑलरेडी 3 या 3 से ज़्यादा तो फट चुका होगा, तो वहाँ पर बॉल रखने का कोई ज़रूरत नहीं है इस कलर का। अच्छा नहीं है तो एक होगा, एक होगा तो एक और रखिएगा, 2 और रखिएगा और वो फट जाएगा। हाँ, नहीं 2 होगा तो एक रखिएगा। यही ना हमारे पास सिचुएशन है, ये हमारे पास सिचुएशन है। अच्छा, जिस कलर का बॉल इस गिवन बॉल में है ही नहीं, मान लीजिए इसमें रेड है ही नहीं, रेड नहीं है इसमें, तो रेड यूज़ करके क्या कर लीजिएगा आप, रेड यूज़ करना क्यों है, रेड यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारा पॉइंट्स है आपके पास। तो किसी कलर का अगर आपके पास एक या 2 बॉल है, हो सकता है आपको एक यूज़ करना पड़े या 2 यूज़ करना पड़े, यही यही होना है और कुछ नहीं होना है। हम्म, यही होना है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको कि इस सिचुएशन से हम वाकिफ़ है। सो यही बात है कि या तो एक को यूज़ करना पड़ेगा या 2 को यूज़ करना पड़ेगा, और 2 को यूज़ करिएगा तो कहीं एल से आर के बीच में यूज़ कीजिएगा, तो ये दोनों तो फट जाएगा ही, और वहाँ पे जो एक होगा वो भी फट जाएगा। हाँ? वो भी एक जो होगा वो भी फट जाएगा। वेरी सिंपल। तो ऐसा कुछ हो जाएगा सिचुएशन, ये फट जाएगा। ठीक है।
अच्छा, तो इसको इंसर्ट करने से कुछ चीज़ फट जाएगा और कुछ चीज़ रह जाएगा, कुछ चीज़ फट जाएगा और कुछ चीज़ रह जाएगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का सारा चीज़ बर्स्ट हो गया, फिर बाकी चीज़ बचा ना, ये सब कनकैटिनेट हो जाएंगे, ये सब कनकैटिनेट हो जाएंगे। फिर इसमें से जो सेम होगा वो फटेगा, 3 होगा तो हाँ वो फट जाएगा। इसी तरीक़ा से अपना खेल चलेगा, अपना खेल इसी तरीक़ा से चलेगा। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है जी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, यहाँ तक, यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव नो प्रॉब्लम खेलना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को यहाँ तक। ऑब्सेस्ड। अच्छा, एक बात और है कि मान लीजिए आपने बोला कि यहीं से यहीं पे मैं रखूँगा और इसके कारण कुछ चीज़ फट गया, फिर ये बाकी चीज़ क्लोज आए, तो इसमें से हो सकता है कि फिर कुछ चीज़ फट जाए, फिर कुछ चीज़ बच जाए, यही सिचुएशन होगा अपने पास। सो दिस इज गोइंग टू बी द सिचुएशन वी हैव। क्या किया जाए यार। ये तो है भाई कि पर यहाँ से फटना शुरू हुआ तो कुछ चीज़ फटेगा। बात यह है कि फिर फर्दर यूज़ कर सकते हैं हम चीज़ को। सोचिए ना, आपके पास कुछ फर्दर आप बोलिएगा कि इसको यार, इस पे फिर से ये एक स्ट्रिंग है अपने आप में, ये फटने के बाद ना ये आपके पास एक नया स्ट्रिंग है, फिर से आप बोलोगे कि इस स्ट्रिंग को भाई, इस स्ट्रिंग को एक मास्क की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही मास्क 1 मास्क 2 तो ठीक ही लिखे हम। ठीक है, मास्क वन और मास्क 2 तो हम सही यूज़ किए हैं यहाँ तक, कि मास्क 1 और मास्क 2 जो हम यूज़ किए हैं ये सही है। लेकिन यहाँ पर जो ये जो यूज़ किए हैं ना, ये थोड़ा सा, इस फॉर लूप को ऐसे नहीं चलाना चाहिए, हमको कलर के हिसाब से चलाना चाहिए। और किसी कलर का एक यूज़ कर सकते हैं या दो यूज़ कर सकते हैं, अगर दो अवेलेबल होगा तो दो यूज़ करेंगे और एक अवेलेबल होगा तो एक यूज़ करेंगे। ठीक है, यही हमारा होना चाहिए। तो सही है, कैसे इसको किया जाए। तो पहले तो ये मास्क 1 है, ये बिना, हो सकता है कि बिना किसी के यूज़ के भी फट सके, ऐसा भी हो सकता है बिना किसी यूज़ के फट सके। कुछ इंडेक्स फट सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ इंडेक्स इसका अभी भी फटने के लिए रेडी है। तो कौन कौन सा इंडेक्स फट सकता है ये पहले कैलकुलेट करके फटा सबको हटा दे यहाँ से। ठीक है, हटा दे, यही भी अपने फ़ायदा है। उसके बाद जो बचे उसके लिए देखें क्या कर सकते हैं, उसके लिए फिर एक ऑपरेशन लगाए और उसके कारण कुछ फट जाएगा, तो कुछ मास्क यूज़ हो गया, लाइक दैट। वही बात है, हर कलर का एक या दो यूज़ करने से हो सकता है काम बन जाए। मान लीजिए कोई फंक्शन F1 को आपने कॉल किया और इसको मास्क 1 और बोर्ड दे दिया, और ये आपको बता दिया कि इसमें से जो जो बिट जो जो फट सकता था उस इंडेक्स को सेट करके ये इस मास्क को रिटर्न किया, और उस मास्क को फिर से आपने मास्क 1 में स्टोर कर दिया। ठीक है, मान लीजिए इंट n बराबर मैं कर लूँ बोर्ड डॉट साइज -1, बोर्ड डॉट साइज कर दूँ। ठीक है, और मैं एक काम और करता हूँ, इतना करने के बाद ये करता हूँ
कि मास्क 1 है अपने पास और एक इंटीजर n है, 1 लेफ्ट शिफ्ट n -1, इफ 1 लेफ्ट शिफ्ट, ऐसे नहीं, ऐसे 1 लेफ्ट शिफ्ट n -1 इज इक्वल टू मास्क 1। इसका मतलब अब आपको फर्दर कितना का ज़रूरत है? 0 का ज़रूरत है भाई, फर्दर 0 का ज़रूरत है। लेकिन सोचिए, अगर यहाँ पर आपके पास मैं एक और इंटीजर इंट n1 बनाता हूँ और इसका वैल्यू रखता हूँ हैंड डॉट साइज। सोचिए कि अभी आपके पास सारा चीज़ ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म हो जाता तो यहीं से आप रिटर्न हो जाते और आप यहाँ पे आ गए, और यहाँ पर आए आपने देखा कि भाई 1 लेफ्ट शिफ्ट n1 -1 ये तो बराबर हो गया आपका मास्क 2 के। इसका मतलब क्या है? आप हैंड में से सारा चीज़ यूज कर चुके हैं, आपके हैंड में जितना बॉल था, you have used all those balls from your hand, and if you have used and some balls are left on your board, then how can you burst that ball? Because they are not going to burst by self. So that means very simple that you can't burst that ball. So in that case, how many balls minimum you will need to burst all the balloons from the board? It's obvious you can't. That's why minimum number will be int max, infinite. So that's it. So that's the edge case we have. So we have modified the problem like this. What next we can do? The next we can do, we can pick, so we can pick five character you have. You can pick either one or either two. So this is the thing you have. So now you have some number of elements left on your board and some number in your hand. So now the situation is that you have some balls on your board and some balls on your hand, and at the moment we will try all those things one by one. So the greedy thought is little there. Number of transition is already, the number of transition is mask 1 times mask 2, that is 2 की power 16 times 2 की power 5, so it is already times 2 की power 5, that is 32. 1 2 3 4 5 6, 2 into 10 की power 6, 3 into 10 की power 6, और फिर हम कितना कर रहे हैं हर एक ट्रांजिशन के लिए ऑपरेशन में? 10 की पावर 6 है भाई, 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते।
We can't do more than 100 operation. हम 100 से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकते भैया। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग का लेंथ 16 है, 16 पंचे 80, 5 कुछ चॉइसेस है अपने पास। इसी कलर का एगो दूगो, 5 कलर का एगो, 5 से ज़्यादा हमको चलना भी नहीं पड़ेगा, 5 से ज़्यादा हमको चलना भी नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए आपके पास 4 कलर अवेलेबल हो, पता हो आपको। मान लीजिए आपके पास एक मैप हो, मैप ऑफ care of vector of int हो। let's say you have the map like this। आपके पास अगर ये मैप है, इस मैप का कोई एलिमेंट क्या कर सकते हैं आप? व्हाट यू कैन डू, इसी कैरेक्टर पर आइटरेट कर सकते हैं भैया, यही कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, और ऑटो आई टी, तो मैप पर आप आइटरेट कर रहे हैं। आई टी डॉट फर्स्ट क्या है? कलर है, सही बात, कलर है। So I have struck in this question that from here, if we anyhow if we are going to move, we have to iterate 5 cross 5 times. 5 cross 5 times it is going to be 25, and 25 times 16, and for each 25 you are going to uh, run over the board string to the length 16. So the iteration is going to be 25 into 16, and this much is the number of transition 2097152. So for each transition, the cost you are paying to calculate every transition is 25 times 16, and after multiplying all these operations, it will reach this much of value: 832 to 4 to 6 to 8. So 8 की power 8, it's around 10 की power 9. So the solution I am trying is not going to work, but there will be solution in this way, I think so. So it's pretty difficult question, I think. We can see the dislike here. 421 is the like and 478 is the dislike. I don't know how people have solved it, but the solution will be in this direction only. Must be in this direction. I think we should run the for loop, for loop. For int I is equal to 0, I less than hand dot size I plus plus, and then we have for int j equal to 0, j less than j equal to I plus 1, j less than and dot size and j plus plus 5. So if we use only one element,
I equal to something. If we use only one element, then check if that element, if that ball is used before or not. So we can check it by simply end it with mask 2. If is equal to 0, that means you haven't used, so you can use it. So if you can use it, very simple, if you can use it, then use it, and we can use at any of the index. For int I equal to 0, I less than, हम इसको एकदम लेफ्ट में भी रख सकते हैं, एकदम राइट में भी रख सकते हैं, और इसको हम एकदम बीच में भी कहीं रख सकते हैं. 0 का मतलब 0 इंडेक्स पे, 1 का मतलब 0 के बाद, 2 का मतलब 1 के बाद. अच्छा, इस तरह से इसको जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं. सो वी कैन थिंक ऑफ इट. हम ऐसा सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते? वी कैन थिंक इट लाइक वाइज. तो मैं 2 फोर लूप लगा के लिख देता हूँ. The same function can tell me the same function can determine a mask na. The same function can determine the mask. For each 5 operation, so we can do like this. Let's say you have a string. Let's say you have the string. Let's say you have the string s1. We can make a string s1 from a string board string. For int I equal to 0, I less than board dot size and I plus plus, and do one more thing. If one left shift I and end it with mask 1, and if it is equal to 0, what that simply means? That simply means one thing: one left shift I and mask with mask 1 is equal to 0. That means a very simple thing. Simple thing is that कि सबसे मेन प्लेयर आउट घूमना दूर करेंगे अब आएगा. तो अगर हम इसका मास्क के साथ एंड ले और ये 0 आ जाए, मतलब ये ith कैरेक्टर अभी भी प्रेजेंट है, तो s1 में पुश बैक कर देते हैं बोर्ड ऑफ आई को. पुश बैक बोर्ड ऑफ आई. ठीक है, इस तरीक़ा से हमारा s1 बन जाएगा. एक बार s1 बन गया तो क्या करना है? अब इस s1 को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं. यहाँ पर ith कैरेक्टर को आप यूज़ कर सकते हैं हैंड के. ठीक है, हैंड के ith कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं.
लेफ्ट इंड पे रख सकते हैं, राइट इंड पे रख सकते हैं, बीच में रख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो इस फंक्शन एफ को अगर आप कॉल करें और इसको ऐसे मान लीजिए, इस F1 को फंक्शन को ऐसे नहीं डिजाइन किया, ऐसे डिजाइन किया कुछ DOART डॉट कॉमा मास्क वन ऐसे करके, ठीक है। तो लेफ्ट इंड पे रख सकते हैं, राइट इंड पे रख सकते हैं और बीच में रख सकते हैं। यही हमारा पूरा का पूरा मुद्दा है, ठीक है। तो हर केस में ही हमको क्या ला के देगा, एक मास्क ला के देगा, जो मास्क ये बताएगा कौन कौन सा कैरेक्टर डिलीटेड है। फिर उस मास्क को देखते हुए हम अपडेट मारेंगे। यही हमारा पूरा का पूरा क्लास है। रिलेटेड टॉपिक क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टैक, स्थिति तो है यार, मेमोराइजेशन है, BFS भी है, तो BFS है ही कि BFS भी लगा सकते हैं। ये जो F फंक्शन है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन BFS से किया जा सकता है। सवाल आसान नहीं है, बहुत लेंदी हो गया यहाँ पे आके। Actually, the solution we are talking about is very complicated, I think. So I have seen in the discussion section, no one has in the first page. I doesn't seen the approach like the approach I am talking about. So I don't think that. So as I can see that this approach is not acceptable. We have seen the complexity of this approach. I was thinking that somehow it will pass, but it is not going to pass because no one has submitted the solution like that. So we can leave this. I just submitting because it will remain, the code will get stored. So that's it. That's why. But we have to think something else. So I finally seen that people have used graph for this. So we should also think graph for it. We should also think graph for it. It will be better. It will be better. So I am totally stuck at this question right now. I am unable to think, and I am very frustrated for this question. So I am leaving this question right now and moving towards the next question we have. And the next question we have from the graph section: largest color value in a directed graph. So there is a directed graph of n color nodes and m edges. The nodes are numbered from 0 to n. So basically, we have a directed graph of n color nodes and m edges. The nodes are numbered from 0 to n minus 1. So you are given a string of color of I is a lowercase English letter representing the color of the ith node in the graph. So basically every node has some color and we have a string whose name is color. So color of I represent the color of the ith node in the graph we have. So you are given a 2D integer array edges. So also you have given all the edges of the graph in the form of a vector of vector. So each vector in this vector of vector. So in this vector of vector there is many vectors, and in so
each vector in this vector of vector represents a edge of the graph. So every vector inside this vector has two values, ai, aj and bj. So aj and bj denotes the jth edge in the graph, that is, and the jth the direction of the jth edge is there is a edge directed so ai comma, so edge of j is nothing but ai comma aj comma bj. That means there is a edge in this graph which starts from aj and moves towards bj. So there is a directed edge in this graph from aj to bj. So a valid path in the graph is the sequence of nodes x1, x2, x3 and xk such that there is a directed edge from xi to xi plus 1, and color value of the path is the number of nodes that are colored the most frequently occurring color along that path. So the color value of the path is the number of nodes that are colored the most frequently occurring color along that path. Okay, so there is a path in this graph. Let's say there is a path in the graph, starts from x1 and ended at xk. So in this path there are k nodes, in this path there are k nodes. So as we know, there are k nodes in the path, so there will be k minus 1 edges. So that's it, all nodes are distinct. So that's it we have. And then after that, so there is a edge from xi to xi plus 1. That's why you are able to go from xi to xi plus 1. So that's what it is given in the question. Now the color value of the path, so there will be, so for this path which is starting from x1 and goes up to xk, there will be some color of this path. So that's what, so the color of this path is defined as the most frequently occurring color in the path. So as you know, this path has k number of nodes, x1, x2, x3, xn, so on xk. So each node has some color. So there will be some color which is occurring the most frequently, that is, there will be frequency of each color in this node. So there will be some color which has most frequently, so whose frequency is highest. So number of nodes that are the most frequently occurring color along this path. So return the largest color value of any valid path in the given graph. Okay, so largest color value, return the largest color value of any valid path color value of the path is the number of nodes that are colored the most frequently occurring color. So color of path is defined as the number of nodes which has same color, maximum number of nodes which has same color in the path. So that's what it is given in the question. So that's it we have. Directed is from aj to pj. So how can we solve this problem? So we want to maximize the number of nodes having same color. So as you see in this question, the number of nodes having same color is 3, and which occurs in the path 0, 1, 3, 4, like this. So you can see the answer is 3. So let's talk how can we solve this question. So as you know, there will be some nodes whose in degree will be 0. There will be some nodes whose in degree will be 0. So we can think like that. So I will go a little fast for this question, because the time we give a lot of time to a question, then it frustrated us. So देखिए क्या है कि हमारे पास बहुत सारा नोड होगा, बहुत सारा नोड का इन डिग्री कुछ का 0 होगा, कुछ का 0 होगा इन डिग्री, लाइक दिस. देखिए कुछ का 0 होगा इन डिग्री. यहाँ सबसे पाथ शुरू हो सकता है, हमारा पाथ यहीं से शुरू होगा. ठीक है, यहीं शुरू होगा. हाँ, हम क्या करेंगे ना, मान लीजिए कि हमारे पास, हम ऐसा कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें कुछ कुछ साइकिल होगा अपने पास इस ग्राफ में. ठीक है, ग्राफ में हमारे पास कुछ कुछ साइकिल होगा इस तरह से. सोचिए यहाँ पर आप बहुत सारा पाथ से आएंगे, तो हर कलर का फ्रीक्वेंसी यहाँ से आने वाले पाथ में बहुत सारा पाथ से यहाँ पर रीच कर सकते थे. तो हर कलर का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, कितना बार कौन फ्रीक्वेंसी का कलर आपको ज़्यादा बार कितना बार मिला. मतलब कोई मान लीजिए ए कलर आपको 10 बार मिला, बी कलर 15 बार मिला, सी कलर 11 बार मिला, डी कलर 12 बार मिला. मतलब आप इस तरह से सोचिए यार, यू कैन थिंक लाइक लिटिल लाइक दिस.
आप इस ग्राफ को इसे देखिए, मैं बना रहा हूँ, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक नोड है, एक यहाँ पर नोड है, एक यहाँ पर नोड है, ठीक है, ये सब डायरेक्टेड है। फिर यहाँ पर नोड है, फिर यहाँ पर नोड है, ये यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, ऐसे करके फाइनली आप यहाँ पे पहुँचे। तो यहाँ पर ये जो यहाँ से शुरू किए होंगे एक पाथ तो ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, मतलब समझ रहे ना, हर पाथ में आपको बहुत सारा पाथ है। तो किसी पाथ में ए का फ्रीक्वेंसी कितना बार मिला होगा, बी का फ्रीक्वेंसी कितना बार मिला मैक्सिमम, सी का फ्रीक्वेंसी। तो आपको क्या स्टोर करना है, यहाँ पर बहुत सारा पाथ से आ सकते थे, तो किसी पाथ में ए का फ्रीक्वेंसी कितना आपको मैक्सिमम मिला, बी का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना मिला, सी का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना मिला, डी का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितना मिला, यही चीज़ आपको यहाँ पर अगर पता चल जाए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सोचिए। अब आपके पास जो है ग्राफ में क्या बचेगा, इस टॉप शॉट को करने के बाद, टॉप शॉट को करने के बाद आपके पास ग्राफ में कुछ साइकिल बचेगा, यही बचेगा कुछ साइकिल। अच्छा, ये साइकिल इस तरह का भी हो सकता है, हाँ इस तरह का भी साइकिल हो सकता है, इस तरह का भी साइकिल हो सकता है। अब क्या करना है ना, सोचिए, ये रहा, ये रहा, तो आप, अच्छा अब देखिए बात ये है कि ये एक साइकिल है जो आपको एक ग्राफ में मिला, ठीक है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर साइकिल इंडिपेंडेंट होता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस तरह से अलग अलग इंडिपेंडेंट साइकिल बने तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, दिक्कत इसलिए नहीं है कि इसमें कुछ नोड होगा, लेट से इसमें कुछ नोड होगा इस ग्राफ में, ठीक है, इस तरह से कुछ नोड होगा और इस तरह से साइकिल है। आप कहीं एक जगह से शुरू करते हैं, पूरा ग्राफ में चल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा ए का कलर कितना बार आता है, बी का कलर कितना बार आया, सी का कलर कितना बार आया, डी का कलर कितना बार आया, इसमें हर एक चीज़ का कलर निकाल लीजिए। और फिर यहाँ पर बहुत सारा रास्ता से आप आ सकते थे इस नोड पर, उसमें ए का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, बी का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, सी का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये भी आप निकाल सकते हैं आराम से। तो आप सोचिए कि इस पूरे के कारण जो है मैक्सिमम जो बनेगा लेंथ वो कितना बनेगा, आप ही खुद बताइए, हाउ मच लेंथ इज गोइंग टू बी। आप कहीं से भी शुरू कर मतलब इसमें कितना आपको, आप समझ रहे हैं ना यार, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यू कैन थिंक दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मान लीजिए ये आपका साइकिल बना, आपको पता चल गया कि इस साइकिल पर बहुत सारा रास्ता से रीच कर सकते थे, उस रास्ता में से कुछ रास्ता में ए का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मिला होगा, कुछ A1 टाइम्स, इसी तरह से बी का फ्रीक्वेंसी कुछ टाइम्स मिला होगा, दैट इज B1 टाइम्स, सो ऑन। So let's continue our discussion. So we are at here. So we have a cycle. So let's say there can be case if the all cycles are independent, no problem, we can store the color of, if this is a cycle, so there will be some path to reach at any node of this cycle. In that path there will be frequency of some color A, color B, color C, color D, so on, color 26, color Z, so we can store that using top sort, and we can then count the number of A, number of B, number of C, number of D, and so on, number of Z in the cycle. And then what we can do, we can do a very simple thing. हम एक बहुत ही सिंपल सा चीज कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं हम कि हाँ, उसके बाद हम जो है इसके आने वाले पाथ में से बहुत सारा पाथ होगा, जिसमें किसी में से एक ए सबसे ज़्यादा होगा, किसी में बी कलर सबसे ज़्यादा होगा, किसी में सी, डी, ऐसे करके जेड। अब हम देख लेंगे, और इस साइकिल में भी ए, बी, सी से लेकर के जेड तक का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता है, तो हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमको पिक करना है किसी भी कलर का, सच दैट कम्बिनेशन ऑफ दीज टू, तो आराम से हम पिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेकिन इसमें कंबाइंड साइकिल भी हो सकता है इस ग्राफ में, दिस ग्राफ कैन हैव द कंबाइंड साइकिल। So this graph, if the graph has some combined cycle, let's say we are talking about, so the cycle will be like this, let's say, so this is going to be the cycle we have. So in this cycle, let's say you start from this node, so you can go like this, 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 so you can cover all the nodes present in both the cycles, you can cover all the nodes present in both the cycles, so no problem till now we have. So we can, so just do stop sort, and in each cycle go and count the frequency, so we have no problem of overlapping cycles. We can consider overlapping cycle as a single cycle, treat it as a single cycle.
Don't think of an overlapping cycle that we have some cycles that is overlapping like this. Don't think like that. We can start from any node of any of the cycle and cover all the nodes. Cover all the nodes. Somehow we can cover all the nodes. So we can consider every overlapping cycles as a single cycle. So we can think this problem as a very simple problem that let's say we will do a top sort and we will have some cycle like this, single cycle. And then we have many paths to reach this cycle, and in each path there will be some number of color A, there will be some number of color B, some number of color C, show on the some number of color Z. That's it we have. And then we can simply count the number of color, each color in this cycle itself. So we have number of colors in the path to reach this cycle, and we have number of color in the given cycle we have. So we can find the number of frequency of any color, maximum frequency of any color, which can be combinedly in the path to reach the cycle and in the path. That's what I am talking about. So we can go for top sort and simply do the DFS and count the number of paths in each cycle, number of frequency of color in each cycle, and then we can combine the number of frequency reaching the path to this cycle and number of frequency in the cycle itself, and using the combination of both those two we can find the maximum frequency. So it's a simple top sort. As we know, the string consists of only alphabetical letter A, B, C to Z. So that's why the number of color maximum is going to be 26. So that's why the complexity will be order of 26 times order of top sort. So no problem till now, we can do the thing like that. So let's implement our the top sort algorithm we want to apply in this problem. So I'm going to implement the logic we have talked about. Let's decrease the size a little bit. Okay, so now it will be better to implement. First, the number of nodes in our graph is going to be colors dot size. So for making the adjacency list, I have to make a vector of int adj. So vector of matrix. A matrix consists of vector. Every index of the matrix is the vector. Now we can make an adjacency list. And also, as you know, we want to do top sort, and for doing top sort I have to also store the vector of int. I have to also calculate the in degree of each node. So I am making a vector of I and dg, the name of the, and at each index of this in degree vector is going to be 0. Then we will iterate over the age for auto it adj not ages edges. So there is a age starting from it of 0 and goes towards it of 1. This is the condition we have. So how we can go for it? So let's have a adj of, there is a path starts from it of 0 and goes to it of 1. So adj of it of 0 dot push back it of 1. This is the simple thing we want to do. Then we have, as we know, there is a age going inside it of 1. So in degree of it of 1 is get increased by 1. So let's increment the in degree of it of 1 by value 1. After this you have the in degree calculated, and now for each node you want to count the, while we will do top sort, we will reach at some node, we will reach some cycle, the node present in a cycle. Then what we will do? We will do a very simple thing. That simple thing is very simple. When we will reach at that node, what we will do? When we reach at that node, we want to calculate the frequency of each, maximum frequency of each color occurring in the path. And for that, as you know, the number of color we have is 26. So we have to make a vector of int dp, and
as we have n node, for n node we want to compute that, and for each node we will have to keep a vector of size 26 comma 0. Initially the frequency of each color is 0. Now I will start doing my top sort, q of int q. So let's iterate over the int degree vector and check if int degree is 0, that is we can start from there. Acha, we can start from there. So int I equal to 0, I less than I and dg dot size and I plus plus. So what we can do, we will simply check that if int degree of I is equal to 0, then simply push I in the queue. So we can simply push the node I in the queue, and after pushing it, what we can do the next? So decrement the int degree by 1, dgi minus minus, and after do that, what we can do? We will have a while loop. While is not q dot empty. Okay, let's pick the first node we have. So as you know, your path starts from node I, so there will be some color of node I. So the number of, so what we have to do, one more thing we have to do, that this is the node I where you have reached, because you have pushed that element in the queue. Okay, you have reached that element. Okay, so dp of I of color of I minus a plus plus. Okay, so as you know, we are starting a path from node I. So in that path, what is the maximum number of frequency of color is going to change? So the color which is going to change for this node is simply, the path is starting from here, so there will be color of this node now, that is color of I. So the frequency of this color in this path is going to be increased now. It will get increased. Very simple thing we have. It will get increased. Very simple. Okay, no worry till now we have. Okay, so this is the thing we have. So we have some node at the front of the queue, so we will pick it out, then we will pop it out from the queue, then we will iterate over the node where we can go from this node x. So int ch adj of what? X, adj of x. Okay, so one by one we will come at the node. So let's decrement the int degree of I and dg of ch minus minus. Okay, so ch minus minus. Okay, no worry till now. If I and dg of ch is equal to 0, if int degree of ch is going to be equal to 0, that means very simple thing, you can push it in the queue, and decrement the int degree by 1. So I and dg of ch minus minus. One more thing, the color of this ch node will be color of ch, so we can increase the frequency of this color in the path where we have reached this node. So there will be a path from where we have reached this node. In this path, the frequency of this color ch, the color of this node itself is color of ch. So this node will have some color, ch node will have some color x. That color value, frequency of that color value is going to be increased by 1. Because you got a node, you have a path, and in that path you have a new node, that is ch. So in that path, the color of each node, frequency of each color of node, then this node is also going to contribute in this path,
and as its color is X, so it is going to increment the frequency of the color X in this path. So we will simply do one more thing, dp of ch of color of ch minus a is going to increase by 1. But before this we have to do one more thing. We have to iterate over int I equal to 0, I less than 26, I plus plus. Do very simple thing, dp of ch of I is equal to maximum of dp of ch of I comma dp of x of I. Very simple thing we will do. So very good, till now we are very good. So we will do these things while our queue is not empty. So something wrong I have written. So यहाँ पर से एक जो है एक करली ब्रैकेट हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसको हटाना पड़ेगा आपको. ये गलत है. ठीक है, इस इफ का भी एक ब्लॉक होगा. This if should be inside this for loop. What is the wrong? There is a one curly bracket we are missing. क्या यार, यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया? यहाँ पे सारा कर्ली ब्रैकेट हटा दे गया. कहाँ एक कर्ली ब्रैकेट का दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है यार? कौन सा कर्ली ब्रैकेट है इसके लिए? क्या गलती? अभी भी दिक्कत है.
अभी ठीक है, यहाँ से फिर से शुरू करते हैं अपन, ठीक है। So in degree of I is equal to 0, then we will push it, and also we will do one more thing, dp of I, color of I minus a, and increase the frequency by 1. So this is the thing we have, and after that what we can do, we will do a very simple thing. That thing is, what is that thing? We will start our top sort. While is not q dot empty, then we have a front node, then we will pop, then we have for int ch, and indg of ch minus minus. Then we have one more thing, for int I equal to 0, I less than 26, I plus plus. Then we have dp of ch of I is equal to maximum of dp of x of I, comma dp of ch of I। ठीक है, इतना करने के बाद क्या कर सकते हैं? ठीक है, हमने पॉप भी कर लिया, ये भी कर दिया। अगर देखिए, अगर आई एन डी जी ऑफ सी एच, इन डिग्री ऑफ सी एच अगर 0 0 है तो एक काम और करना पड़ेगा, इन डिग्री ऑफ सी एच को घटा दीजिए एंड क्यू में आप पुश कर दीजिए उसी टाइम पे, किसको? सी एच को पुश कर दीजिए। और एक बात और कीजिए, डी पी ऑफ सी एच एंड कलर ऑफ सी एच माइनस ए को आप प्लस प्लस करिए। ठीक है, इतना करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, इतना करिए। ठीक है, इतना करने के बाद आप एक वेक्टर बनाइए, वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड, और इसका साइज रखिए n और 0 रखिए, और देखिए 4 जिसका इन डिग्री 0 है या माइनस है, लेस देन इक्वल टू 0 है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, और कुछ नहीं करना है अपने को। इफ आई एन डी जी ऑफ आई इज लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये नोड है जो कि टॉप सॉर्ट में यूज हो चुका है, क्यू में जा चुका है, तो इस पर फर्दर नहीं जाना है, तो ये विजिटेड है, तो विजिटेड ऑफ आई इज इक्वल टू 1। इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम है अपने पास, हम जो है आइट्रेट कर सकते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, मान लीजिए हम एक वेक्टर ऑफ इंट आंसर बनाते हैं। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट आंसर इज इक्वल टू आंसर, और इसका साइज रखते हैं 26,0, 26,0। अच्छा, इसको हम पहले ही रखते हैं यार, क्या दिक्कत है, इसको पहले ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। कहाँ बनाया यार आंसर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कर देते हैं। लेट्स राइट इट हियर, और हम क्या करते थे ना, कलर ऑफ आंसर ऑफ कलर ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू 1।
So the question was very simple. It was not covering the case of cycle, as you, it is given in the question that if there is a cycle in the graph, return -1. Otherwise, choose some path, and in that path there will be some node that you can see the graph given in the example one. Here a path starts from 0 and end at node 4. So you can see in this path there is 3 nodes having color 4. So it's a simple top sort. If you do the top sort, then you have a dp table. In that dp table, dp of n cross 26, find any grid in which there will be a maximum value. In that, and that value will be your answer. So there is no need to do anything more, because it has it is given in that there is no need. If there is a cycle, return -1. So that's why we can do like that. But if we consider the case of cycle, I was solving the problem by considering if there is cycle also exists, overlapping cycle also exists, then what we can do. But there is no need to do that. So I simply do the same things as we have talked, but simply change one thing, that after doing the top sort, see if any of the node is unvisited, that means there is a cycle, then return -1. Otherwise, choose in the dp table we have filled. You can see the dp table I have filled using top sort. While doing top sort, here I have filled the dp table. So that dp table is going to contain some maximum value at any point. So that maximum value I want to return. So you can see the maximum value I have computed in the dp table. So that's all we have done. And if I will submit it, so I was making the problem a lot more complicated without understanding the problem statement more clearly. You can see it's working. So it was not that much of tough, because if it covers the case of, it consider the case of cycle also, then it will be tougher, and I think unsolvable maybe the case it is. So this is the fifth question I have to today. I have chosen 6 question, and I have chosen 5 question. In those 5 question, this is the last one. So we will attempt this question and we will stop our attemptation here. So we have n building numbered from 0 to n-1. Each building has a number of employee, its transfer season, and some employee want to change the building they reside in. So we have n building, and building are numbered from 0 to n-1. Each building has a number of employee. Every building has some number of employee. It's the transfer season. So the season is going on. In this season, people will transfer from one building to another, and some employee want to change the building they reside in, and some employee are currently in some building and they want to change it and go to somewhere else. So let's say you are given an array request where request I is from I to 2i, represents an employee request to transfer from building from I to 2i. तो आपको एक एरे रिक्वेस्ट दिया गया है. रिक्वेस्ट ऑफ आई रिप्रेजेंट करता है 2 इंटीजर फ्रॉम आई कॉमा 2i. रिप्रेजेंट्स एम्प्लॉय रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फ्रॉम आई टू 2i. इसका मतलब यह है कि एक एम्प्लॉय ऐसा है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि फ्रॉम आई बिल्डिंग से मैं 2i बिल्डिंग में जाना चाहता हूँ. ऑल बिल्डिंग आर फुल, सब बिल्डिंग फ्यूल है इनिशियली. सो ए लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट इज अचीवेबल only if for each building the net change in the employee transfer is 0. तो आप भी जानते हैं कि अगर इंटरचेंज करने के बाद भी नेट चेंज 0 रहता है, क्योंकि सब बिल्डिंग फुल था, तो आप कहिएगा कि इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द बिल्डिंग. सो फॉर एग्जांपल n बराबर 3, the 2 employee are living building 0 and 1 is living building 1. So there is a, so return the maximum number of achievable request. So return the maximum number of achievable request. तो आपको ये बताना है कि रिक्वेस्ट आपको बहुत सारा दे रखा है, आपको ये बताना है कि मैक्सिमम रिक्वेस्ट आप कितना कर सकते हैं अचीव. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेंज विच यू कैन डू. तो ये थोड़ा सा अच्छा है. अच्छा, बिल्डिंग का संख्या 20 ही है और रिक्वेस्ट का संख्या 16 ही है. आपको एट मैक्स 16 रिक्वेस्ट मिलने वाला है. तो ये है, तो हमारे पास बिल्डिंग है 0 से n-1. कुछ बिल्डिंग में कुछ एम्प्लॉय हैज़ ए नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इट्स ट्रांसफर सीजन, एंड सम एम्प्लॉय वांट टू चेंज द बिल्डिंग.
अच्छा, ये नहीं बता रखा है कि किस बिल्डिंग में कितना एम्प्लॉय है। जो भी है, जितना सीट है उतना एम्प्लॉय है हर बिल्डिंग में, ये बात बता रहा है। 20 बिल्डिंग है हमारे पास। वी हैव 20 बिल्डिंग्स। हमारे पास 20 बिल्डिंग है। तो व्हाट वी कैन डू इफ वी हैव 20 बिल्डिंग, व्हाट वी कैन डू? लेट्स टॉक, वी हैव 20 बिल्डिंग्स, दिस इज सम नंबर ऑफ बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में कोई जाना चाहता है, तो अगर ऐसा कुछ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट का संख्या कितना है? ठीक है, रिक्वेस्ट का संख्या है 16। तो वही बात है कि 2 की पावर 16 कितना होता है? 2 की पावर 16 कितना होता है? वही बात है, 2 की पावर 16 नहीं। अभी बात करते हैं कि थोड़ा सा ब्रूट फोर्स होके चलते हैं, क्योंकि और क्या है, इतना कांस्टेंट कम है तो ब्रूट फोर्स ही हमको सोचना चाहिए। वी शुड थिंक ऑफ ब्रूट फोर्स because there is less constant we have, so there is no need of optimization. At least you can find the solution, it will be better. So there is a, so this problem require a brute force solution, so think very brute forcefully. So we have some number of buildings. Let's say there is some number of requests that some people wants to go from this building to this building, and if that request is, let's say the request is 5, so 5 people want to go from this building to this building. Okay, in the similar manner, so if you, what do you think? You can think one thing. Let's say from some way people can reach this node. So it may be the case from some building, some people, let's say x1 people want to enter this building. So there will be x2 people who want to reach this building, and there will be x3 people who want to reach this building. This is the case we have. So at most how many people we have? So इस तरह से ही होगा ना चीज। तो आप ये सोचिए कि यहाँ से कितना ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर 5 पीपल ही जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आ कितना सकता है? टोटल 5 ही आ सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। ये तो एक बात हो गया। कितना रिक्वेस्ट को हम हैंडल कर सकते हैं एटमोस्ट? तो अगर ब्रूट फोर्स फुली सोचें तो ब्रूट फोर्स क्या है इसका? 16 में से कोई सबसेट चुन लीजिए। 16 वो आपके पास रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट में से कोई भी सबसेट चुनिए, और उस सबसेट में से देखिए कौन कौन सबसेट वैलिड है। वैलिड ट्रांजिशन आपको दे रहा है कौन कौन सा सबसेट। ठीक है, तो सबसेट जनरेट करें अगर 16 में से, 16 है ना, 2 की पावर 16 निकालना है हमको। 2 की पावर 16 कितना होता है? ये होता है 63556। सो इतना नंबर ऑफ सबसेट बनेगा। तो इतना सबसेट, और हर एक सबसेट को हमको, तो 65,000 सबसेट बनेगा, 66,000 सबसेट बनेगा। आप सोचिए आपके पास 66,000 सबसेट बनेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कितना है? 16 रिक्वेस्ट है, तो 66 सबसेट आपके पास बनेगा। हर एक सबसेट में ज़्यादा से ज़्यादा 16 रिक्वेस्ट हो सकता है। आपको ये सोचना है, अच्छा 16 रिक्वेस्ट होगा, तो सीधा सा बात है कि बहुत सारा नोड है, इस नोड पर आने का बहुत सारा रास्ता है। ठीक है, हर रास्ता पे कुछ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, हर एक रास्ता पे कुछ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होगा, फिर इससे कहीं पे जा रहा है, फिर इससे कहीं पे जा रहा है, फिर इससे कहीं पे जा रहा है, फिर ऐसे करके साइकिल बनेगा।
हर नोड से एक ही आउटगोइंग एज होगा, ये तय है। ठीक है, तो सीधा सा बात है कि नंबर ऑफ इन डिग्री ऑफ ईच नोड, अच्छा इन डिग्री, हर एक नोड में जो इन डिग्री होगा ना वो उसके ऑड डिग्री से बराबर होगा। हाँ ये बात रहा। मान लीजिए यहाँ से 5 आदमी जाना चाहता है और यहाँ पे 5 आदमी आना चाहता है, ये हर एक नोड के लिए ये बात ट्रू होना चाहिए, जितना आने वाला उतना निकलने वाला। सीधा सा बात है कि आप सबसेट जनरेट करो, मास्क जनरेट करो, मास्क सबसेट जनरेट करो, और हर एक सबसेट को आप चेक कर लो। दैट्स वेरी सिंपल थिंग यार, कि हम यही ना है कि हमारे पास रिक्वेस्ट का कुछ सबसेट है, तो इसका मतलब कोई हर रिक्वेस्ट बोल रहा होगा कि इस बिल्डिंग में कितना आदमी को आना है, ठीक है, और ये भी बोल रहा होगा कि इस बिल्डिंग से कितना आदमी को जाना है। तो हर एक बिल्डिंग से आने वाला और जाने वाला का संख्या बराबर होना चाहिए उस, अगर हम सबसेट को चुने तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये, इतना टफ सवाल ये है नहीं। हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास इंट m है, रिक्वेस्ट का साइज REQUEST, रिक्वेस्ट डॉट साइज, ये हमारा क्या है, m का वैल्यू है। तो हमको एक मास्क जनरेट करना है, ठीक है, तो हम एक करते हैं, एक फंक्शन f को चलाते हैं, ठीक है, और इसमें 0 देते हैं कि 0 से स्टार्ट करो, और तुम्हारे पास एक 0 मास्क है, मास्क 0 है, और इसको बता देते हैं कि m है हमारे पास टोटल एलिमेंट। ये क्या करेगा, मान लीजिए आपके पास सेट ऑफ इंट st है, इंट st है, ठीक है, तो ये मास्क जनरेट कर देगा, ठीक है, और सारे मास्क को डाल देगा इस सेट में, तो इंट it st। अब इस st पर आइट्रेट करते हैं, ठीक है, और हम एक वथी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वेक्टर ऑफ इंट, डिग्री कैलकुलेट करने वाला वेक्टर बनाते हैं dg, और इसका साइज रखते हैं n,0, n,0 रखें, हाँ 0 से n-1 तक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्या करते हैं ना, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 16 i प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे ना, हम देखेंगे कि इफ़ वन लेफ्ट शिफ्ट i, और इसका अगर हम एंड कर लें किसके साथ, अगर हम इसका एंड कर लें, किसके साथ एंड करना है आपको, किसी के साथ नहीं एंड करना है इसका आपके पास ये जो IT है ना, IT के साथ एंड करें, और ये एंड वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब सीधा सा बात है कि आप जिस आप इस मास्क में ith इंडेक्स सेट है, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट ऑफ i कंसीडर किया गया है इस सबसेट में, तो कंसीडर किया गया है तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा बात है कि भाई अगर हम रिक्वेस्ट ऑफ i को देखें, रिक्वेस्ट ऑफ i को देखें, रिक्वेस्ट ऑफ i को, तो अगर रिक्वेस्ट ऑफ i को हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं, हम वेरी सिंपल सा बात है यहाँ से कि हम क्या करेंगे, बोलेंगे क्या, dg ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ i, और क्या होगा बताइए आप, 0, यहाँ से निकल रहा है आदमी, यहाँ से आदमी निकल रहा है, तो इसको घटा देते हैं, और जा कहाँ पे रहा आदमी, dg ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ i1, यहाँ पे जा रहा है, तो ठीक है, इसको 1 से बढ़ा देते हैं, और इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, एक काउंट भी रख लेते हैं, इंट काउंट इक्वल टू 0, और यहाँ पर कर देंगे काउंट प्लस प्लस, और हम एक आंसर भी बना लेते हैं, इंट आंसर इक्वल टू 0, और हम इसके बाद चेक करेंगे कि फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, इफ dg ऑफ i इज नॉट इक्वल टू 0, अगर dg ऑफ i इज नॉट इक्वल टू 0 है तो सीधा सा बात है कि कंटिन्यू कर जाओ, नहीं तो आंसर बराबर मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा काउंट करो,
और इतना करने के बाद यहाँ से रिटर्न आंसर करो। ठीक है, अब बात रहा कि हमारा ये जो है void f फंक्शन है, ये कैसे कैलकुलेट। तो इंट आई पे है, इंट मास्क है आपके पास, और आपके पास क्या है, और आपके पास m है। तो आप इसको या तो टेक कर सकते हैं या तो नहीं टेक कर सकते हैं। तो f ऑफ i प्लस 1 कॉमा मास्क और 1 लेफ्ट शिफ्ट i कॉमा m। और एक तो है आपके पास कि सीधा सीधा f ऑफ i प्लस 1 कॉमा मास्क का मास्क रहने देते हैं और m का m रहने देते हैं। तो इसको इंट m करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, और इतना करने के बाद इफ़ i इक्वल टू m, इफ़ i इज इक्वल टू m, सीधा सा बात है st डॉट इंसर्ट मास्क। और इतना करने के बाद हम हो जाएंगे रिटर्न यहाँ से। ठीक है, इतना करने के बाद हम हो जाएंगे रिटर्न। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो है सेट जनरेट हो गया है और फिर आंसर भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। m हमारा रिक्वेस्ट डॉट साइज है। चलिए, तो ये 6 दे रहा है। 1 मिनट मैं चेक करता हूँ क्या गलती है। The same logic I have implemented, you can see there was a silly mistake I have done. I was done that time, but now it's working, so I can show you by running once more. So it is not that much of tough question because there is a little bit of concept. We don't need to think a lot. So as you can see, we are done with this problem. So we will stop our solving session here for today, and we will see the next problem or remaining problem on tomorrow. So thank you.